which was founded and registered in 2014. Ms. Bhautina Musahari has co-founded AIET to work towards promoting rights of the person with disability, especially focusing on women with disability as well as marginalized women. I now request our student to welcome Ms. Bhautina Musahari with an RMA. May I now take the pleasure to invite onto the stage the moderator of the session, Sri Lakshmi Narayan Nanda. Sri Lakshmi Narayan Nanda is a child protection specialist, UNICEF Assam. He is an experienced child rights and protection specialist with a strong understanding of child rights, human rights, and experience in creating community-based development and management model. I request our students to also welcome him with a RMA. I request our audience to welcome all our guests on the stage with a huge round of applause. I now forward the stage to Sri Lakshmi Narayan Nanda for the rest of the session. Sir. Thank you so much for such comprehensive introduction. A very good afternoon. Namaskar. Kurumbai. As we are entering into the second day of the first international festival, Knowledge Festival. And today we have with us esteemed panelists, those who have accomplished in the field of child rights and child protection, and also set examples in their own field, and also guide and inspire many young people in their own state as well as across the country. And also we have international representation from Japan and also from Germany. May I take this opportunity to quickly brief all of you little about this international festival before I hand it over and invite our speaker to say their thoughts. As you know that this celebration, it was started last year, and then it was started with this small talk like how do we think about to organize a dialogue for peace, dialogue to think about how we can rebuild the BDR region with the concept of safe, smart, green BDR under the leadership of our Honorable CM, Mr. Pramod Boroji, and together with Bodoland University, this first knowledge festival, international level knowledge festival, it was planned and then it's materialized. Often we say that knowledge is power. Yes, knowledge is power, but we need to celebrate knowledge. We need to exchange knowledge. We need to share our knowledge. We need to share the learnings that we gain. And a festival like this, which the Bodoland University and the Bodoland Autonomous Council (BTC), so they are doing it. It gives an opportunity for stakeholders across representing various sectors to come forward, share their learnings, and also challenge each other and support each other, identify the areas. Since we are going to talk
center around our talk on child rights and realizing the rights of children and role of stakeholder. And when I look at the profile of each esteemed panelist, and they represent different sector, we have representation from State Commission for Protection of Child Rights, which is the autonomous institution, statutory institution set up under CPC Act 2005. We have representation from academia. Professor Ursula is here, though she is not well, but thank you, ma'am, for being here and then coming from all the way from Germany to share your thoughts and with this team here. We have Mana Tanaka from Japan, from Chairperson Munakata Foundation, Japan. She is here. She is going to share very important topic what we often use in our development jargon about how do we exclude, how do we include the exclude population in our design thinking, in our inclusive planning, in our both planning as well as in education. So she is going to deliver her lecture on this particular area. And we have someone, Mr. Mikul Dasguya, who has demonstrated how to implement law in true spirit in collaboration with police workforce. And this is one of the finest program, innovative program, and also known as across the country. Everyone is talking about this collaborative effort of Uscha, Assam Police, and UNICEF, where they have demonstrated this whole concept of child-friendly police in Assam. Now other states are looking forward this initiative to learn and replicate this model. So he is going to deliver on the plight of victim of child sexual abuse and how the legal framework, particularly the POCSO Act, he and his team use this framework to provide justice to the children. And we have Bhavatina Mushahari. She is going to talk about children with special needs. We often neglect. We often ignore them in our decision, in our planning, in our decision making process, because all the time when you look at in our planning, we do the planning in general. We do the planning. We often neglect that who are the vulnerable. So when you're talking about rights of children, I think it is most important. Yesterday also I mentioned it. Like we need to consider few things in our mind. One is we need to understand the deprivation, particularly the multiple deprivation, vulnerability, who they are, and why they are vulnerable. What are the root causes? What makes them more vulnerable? And in the changing world, with the advancement of technology, with the changing world order, how it is impacting the life of the children in different contexts. And within Assam, we have variation. We have variation in the sense we have population who is living, tea garden belt. Close to 20% of the Assam population living in the tea garden belt. They have different experience altogether. We have a population who are in the BTR region. They experience different kind of challenges. So unless and until we identify this excluded community with this minority community or this community, vulnerable community, or the community who is living in the village setting, it's difficult to design a plan, inclusive plan. The third one is most important one, is for which today we are gathered here. This stakeholder. Each stakeholder, they have a stake, including children, and children as a stakeholder. That's the new thing which we need to accept and recognize in our planning process as a duty bearer. So how do we recognize, how do we accept, how do we protect, how do we facilitate and realize the rights of children in our planning, in our designing is something which we need to think about. I also say the representation from different departments, particularly Women and Child Development Department and Education Department, along with our student of Borderline University and other university. So next 2 hours, it's going to be quite tough and challenging. And as a moderator, my job is to basically, help the speaker in terms of time management. But I find it difficult because people coming all the way from different places, telling them that you have to deliver a lecture within 10 minutes and 15 minutes, it's not good for my part, but I'll have to do that.
With this short note, may I now request the panelists. We'll start with Dr. Sunita Chakraborty, Honorable Chairperson, State Commission for Child Protection. And each of the panelists, they will get 20 to 30 minutes depending on the subject, and also if you have any presentation you want to share, then please give the pen drive so that we can ask our student volunteer to upload it. And I would request to stick to the time limit, 20 to 30 minutes, and deliver it as long as as much as possible in the local language, so that audience here they can connect it immediately. So Assamese, Bodo, Hindi, English mix. So with this note, may I now invite Dr. Sunita Chakraborty, Honorable Chairperson SCPCR, to share her few thoughts and open the today's deliberation. Thank you. Thank you, Lakshmi. Good afternoon, everyone. Good afternoon. Namaskar. Kulumbai. So, respected dignitaries on the dais, Srimati Mala, Srimati Ursula, Sri Miguel, Srimati Rautina, and Sri Lakshmi Nandaji, and respected audience, respected participants. First of all, I would have loved to speak in Bodo language, but unfortunately, I'm not versed with Bodo language, so I would like to apologize at the beginning. So, since I have seen in my front, it's a mixture group. There are students from the university, there are officials, and there are women from different government or organizations. So, I would speak in Ohmia and English কম আৰু মই বড়ো ভাষাত ক'বলৈ পালে অলপ ভাল পালোহেঁতেন, কিন্তু আনফৰ্চুনেটলি মই নাজানো। মই আশা ৰাখিছোঁ নেক্সট টাইম অলপ হ'লেও মই বড়ো ভাষা শিকি আহিম, অন্ততঃ মই অলপ যাতে ক'ব পাৰোঁ। So, I have come from Assam State Commission for Protection of Child Rights, অসম শিশু অধিকাৰ সুৰক্ষা আয়োগ। আপোনালোকে জানেনে শিশু অধিকাৰ সুৰক্ষা আয়োগ কি? Are you aware of Child Rights Commission? Please answer. I am not going to make any PowerPoint presentation because I want to make this session little interactive. So I would love if you just reciprocate my question. So are you aware of Child Rights Commission? Child Rights Commission or বিষয়ে শুনিছেনে আপোনালোকে? জান শুনিছে যদি হাত টানক। বহুত কম মানুহে শুনিছে। আপোনালোকে নাজানে নহয় পিছৰ ফালে যে আছে? জানে শিশু অধিকাৰ সুৰক্ষা আয়োগ জানেনে? নাজানে? আচ্ছা জানে? জানে, ঠিক আছে। মই অলপ কৈ দিছো শিশু অধিকাৰ সুৰক্ষা আয়োগ, Assam State Commission for Protection of Child Rights, simply Child Rights Commission. So first of all, I would like to ask you, child কাক কয়? Who is a child? Kok? Below 18 years. Below 18 years. জানেনে আপোনালোকে? Child মানে কাক কয়? Any person below 18 years. 18 বছৰ তলৰ এজন
ব্যক্তি বা এজন ল'ৰা বা এজনী ছোৱালী শিশু বুলি ধৰা হয় শিশু বা কিশোৰী আৰু আমি যি চাইল্ড ৰাইটছ কমিশ্যন ইট ইজ এ ষ্টেটিউটৰী বডি চাইল্ড ৰাইটছ কমিশ্যন আমি ইমপ্লিমেণ্ট নকৰোঁ আমি মনিটৰ কৰোঁ যেনেকে অলপ আগে লক্ষ্মীনন্দা যিয়ে তেখেতে কৈছিলে যে যিবিলাক ষ্টেক হোল্ডাৰ্ছ আছে ষ্টেক হোল্ডাৰ্ছ মানে যিবিলাক শিশু অধিকাৰৰ লগত যিসকল জড়িত হৈ থাকে NGO হ'ব পাৰে বেলেগ বেলেগ ডিপাৰ্টমেণ্ট হ'ব পাৰে কি ডিপাৰ্টমেণ্ট হ'ব মই অলপ পিছত কৈ আছোঁ গতিকে কোনো ব্যক্তি হ'ব পাৰে শিশুসকল নিজেও হ'ব পাৰে এই সকলো হ'ল ষ্টেক হোল্ডাৰ আৰু আমি এই ষ্টেক হোল্ডাৰ বিলাকৰ তেওঁলোকে শিশু অধিকাৰৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে কিদৰে কাম কৰিছে আমি মনিটৰ কৰোঁ আমি ইমপ্লিমেণ্ট নকৰোঁ আৰু যেতিয়া আমি দেখা পাওঁ যে ক'ৰবাত চাইল্ড ৰাইট ভায়লেশ্যন হৈছে তেতিয়া আমি তাত ইণ্টাৰভেন কৰোঁ বা আমি হস্তক্ষেপ কৰোঁ I would like to apologize our dignitaries, especially from those who have come from abroad. So I would like to interact in Assamese mostly. So maybe you will not be able to follow. So I apologize for that. So আমি হলো চাইল্ড ৰাইটছ কমিশ্যন যিখিনি আমাৰ মানে আমি যিটো ষ্টেটিউটৰী বডি আৰু এই চাইল্ড ৰাইটছ কমিশ্যন was constituted under section 17 of the Commission for Protection of Child Rights Act 2005 2005 যিখন আমাৰ চাইল্ড ৰাইটছ কমিশ্যন এক্ট আছে তাৰ আণ্ডাৰত হৈছিলে 2010 চনৰ 4th March of 2010 for protection and promotion of survival, development, protection and participation rights of children. এতিয়া আমাৰ যিখিনি পাৱাৰ আছে আমি আমাৰ ফাংচন আছে আমি কি কৰিব পাৰো আমি কি কৰো সেইখিনি মই আপোনালোকক কৈ দিছো যিহেতু আপোনালোকে চাইল্ড ৰাইট কমিশ্যনৰ বিষয়ে শুনা নাই বা আপোনালোকে নাজানে সেইকাৰণে মই কৈ দিছো আমাৰ ফাংচন হ'ল আমি কি কৰো examine and review the safeguards of laws and recommend for their effective implementation. Present to the government regarding working on those safeguards. Examine all factors that inhibit the enjoyment of rights of children affected by terrorism, communal violence, riots, natural disaster, domestic violence, HIV/AIDS, trafficking, maltreatment, torture and exploitation, pornography and prostitution, and recommend appropriate remedial measures. Spread child rights literacy and awareness through publication, the media, seminars, and other available means. Then, inspection of any juvenile custodial home or any other place of residence or institution may remedial measures. একদম পিছফালে বহি আছে যে আপোনালোকে কথাখিনি বুজি পাইছেনে মই ৰিকুৱেষ্ট কৰি আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিব খুজিছোঁ যদি আপোনালোকক কিবা জানিব খোজে মোক সুধিব পাৰিব আৰু মই ভাল পাম যদি আপোনালোকৰ কিবা প্ৰশ্ন থাকে আপোনালোকে সোধে আৰু আমি বেছিকে ইণ্টাৰেকশ্যন কৰিবলৈ পালে ভাল পাম আৰু মই খুব ইনফৰ্মেলি কথাখিনি আলোচনা কৰিম এইটো মই কোনো ধৰণৰ ভাষণ দিয়া নাই আৰু যেহেতু চাইল্ড ৰাইটছৰ আমি শিশু অধিকাৰৰ কথা সবে কৈ থাকো শিশু অধিকাৰ মানে কি বহুত আজিকালি আহি থাকে আৰু এটাটো একদম এতিয়া হট নিউজ আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে বাল্য বিবাহ এইটো এটা শিশুৰ অধিকাৰৰ কথা বহুত ধৰণৰ আলোচনা সমালোচনা হৈ আছে গতিকে বহুত শিশুৰ লগত জড়িত বহুত কথা হৈ থাকে আপোনালোকে গম পায় বহুত শিশুৰ লগত কি হৈ থাকে
এটা যেনেকে আমি পক্সো কেছ বুলি কওঁ পক্সোনো কি বস্তু এটা ধৰ যে শিশু কোনোবা ছোৱালী কেতিয়াবা ৰেপ হৈছে বা ধৰ্ষণ হৈছে কেনেকে চাইল্ড ৰাইট ভায়োলেশ্যন হয় এই কথাখিনি আপোনালোকে জনাটো দৰকাৰ আৰু সেইকাৰণে আপোনালোকে মই আশা কৰিম যে মোৰ টাইম বহুত কম তথাপি মই যিমান পাৰো চমুকৈ ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু আপোনালোকে যদি মোৰ লগত ইণ্টাৰেকশ্যন কৰে বা আপোনালোকে মোক কিবা প্ৰশ্ন সোধে তেতিয়াহ'লে ভাল পাম মই তেতিয়া মই ভাবিম যে মই গুৱাহাটীৰ পৰা আহিছো আপোনালোকৰ লগত কথা পাতিছো আৰু এইটো দিছ ৱৰ্কশ্বপ ইজ এ নলেজ শ্বেয়াৰিং তো এইখিনি আমি নলেজ আমাৰ জ্ঞান আমি আপোনালোকক যিখিনি আমি কৰিছো বা আমি যিখিনি জানো আপোনালোকক আমি যদি জনাব পাৰো ভাল হয় গতিকে মই আশা কৰিম আপোনালোকে যাতে কথাখিনি কিবা যদি সন্দেহ থাকে ইফ ইউ হেভ এনি ডাউট প্লিজ লেট মি নো প্লিজ আস্ক মি এটা আৰু আছিলে আমাৰ যেটো চাইল্ড ৰাইট কমিশনৰ ওপৰত যেটো ফাংচন inquire into complaints and take suo motu notice of matters relating to deprivation and violation of child rights non-implementation of laws providing for protection and development of children non-compliance of policy decisions guidelines or instructions aimed at mitigating hardships and ensuring welfare of the children and to provide relief to such children or take up the issues arising out of such matters with appropriate authorities. Also, conduct study and research in the field of child rights. Powers relating to inquiries. The Commission have all the powers of the Civil Code, trying a suit under the Code of Civil Procedure 1908, while inquiring any matter relating to deprivation and violation of child rights, and in particular in respect of the following matters, namely, the Civil Court যিটো পাৱাৰ থাকে সেইখিনি পাৱাৰ আমাৰ কমিশনৰো আছে আৰু এই পাৱাৰটো আমি কেনেকে কি ক্ষেত্ৰত আমি ব্যৱহাৰ কৰো summoning or enforcing the attendance of any person or and examining him on oath আমি কাৰোবাক সামন দি মাতিব পাৰো যেতিয়া আমি কিবা চাইল্ড ৰাইটছৰ কেছ হয় আমি সামন দি মাতিব পাৰো বা discovery and production of any document receiving documents on affidavits requisitioning any public record or copy thereof from any court or office issuing commissions for the examinations of witness or documents. And the commission also have power to forward any case to a magistrate to try the same. কিবা কেস যদি হয় আমি ম্যাজিস্ট্রেটক আমি ফরওয়ার্ড কৰিব পাৰো আৰু আমাৰ কমিশনৰ হল we have got the power of the civil court আৰু যেতিয়া আমি ইনকোয়ারি কৰিলো আমাৰ ইনকোয়ারি হৈ গল then after that what we do the commission can take any of the following steps upon completion of an inquiry কি কৰো আমি recommend the concerned government or authority to initiate proceedings or prosecution or other action. The Commission can approach the Supreme Court or court concerned for such directions, orders, or writs as that court may deem necessary. Recommend the concerned government or authority to grant interim relief to the victim or members of the victim's family as the Commission may consider necessary. এতিয়া আমি আপোনালোকে যিবিলাক চাইল্ড ৰাইটছৰ যিবিলাক এক্ট আছে যেনেকে চাইল্ড ৰাইটছৰ আইন শিশুৰ ক্ষেত্ৰত বহুত আইন আছে যেনেকে এখন আইন হ'ল Right of Children to Free and Compulsory Education Act 2009 তাৰ মানে কি প্ৰত্যেকজন শিশুৱে তেওঁৰ ৰাইট আছে অধিকাৰ আছে আন্ডাৰ যিখন ফ্ৰী এণ্ড কম্পালসৰি এডুকেশ্যন ৰাইট টু এডুকেশ্যন এক্ট আছে তাৰ অধীনত প্ৰত্যেকজন শিশুৱে আমাৰ দেশত থকা প্ৰত্যেকটো শিশুৱে শিক্ষা ল'ব লাগিব ফ্ৰী এণ্ড কম্পালসৰি এডুকেশ্যন বিনামূলীয়া শিক্ষা পাব লাগিব এইটো হ'ল ৰাইট চাইল্ডৰ ৰাইট আপোনালোকে ভাবিব পাৰে কি ৰাইট হ'ব পাৰে যে আমাৰ সংবিধানে আমাৰ কনষ্টিটিউচনে শিশুৰ কাৰণে ৰাইট কিছুমান অধিকাৰ
হোৱাকৈ কিছুমান আইন আছে, কিছুমান act আছে. So these acts are Right to Education Act and Act 2009. All the children they are to get education, free and compulsory education. তাৰপিছত আৰু এখন এক্ট আছে যিখন পক্সো এক্ট বুলি কয়, PO কি হয় পক্সো, POCSO, পক্সো এক্ট শুনিছেনে? পক্সো এক্ট শুনিছেনে কোনোবাই? প্লিজ, মোৰ কথাবোৰ বুজি পোৱা নাই নেকি? পাইছেনে? পাইছেনে? পাইছে, থেংক ইউ। নহ'লে পক্সো এক্টখন শুনিছেনে? Protection of children from sexual offense. এই যে আমি কিছুমান বহুত শুনি থাকো sexual offense, কিবা ৰেপ হৈছে, কৰবাত কিবা হৈছে, কিন্তু আমাৰ এখন এক্ট আছে, আইন আছে। এই আইনখন বহুত কাঢ়া আইন, পক্সো এক্ট বুলি কোৱা হয়, পক্সো আইন। এই এক্টখনৰ অধীনত কোনোবাই যদি কোনোবা শিশু, কোনোবা ছোৱালী বা কোনোবা ল'ৰা যদি সেক্সুৱেলি এবিউজ কৰিছে, সেক্সুৱেল এবিউজ বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ হ'ব পাৰে, যেনেকে আনকি যদি কোনোবাই বেয়া শব্দ ব্যৱহাৰ কৰিছে, কোনোবাই যদি কিবা পৰ্নোগ্ৰাফি, পৰ্ন ফিল্ম দেখুৱাইছে, বেয়া লেংগুৱেজ ইউজ কৰিছে, বেয়াকে টাচ কৰিছে, কোনোবা শৰীৰৰ বেলেগ বেয়া শৰীৰৰ অংগ যিবিলাক টাচ কৰিব নালাগে তাক টাচ কৰিছে, সেইবিলাকো পক্সো এক্টৰ আণ্ডাৰত আহে। যেনেকে ৰেপ বা এইবিলাকতো আছেই, বহুতে কি কৰে জবৰদস্তি কৰে, এইবিলাক চব পক্সো এক্টৰ আণ্ডাৰত আহিব। আৰু যিবিলাক ছেকশ্যন আছে, পক্সো আইনখন বহুত ষ্ট্ৰং, বহুত কঠোৰ, গতিকে পক্সো এক্টৰ আণ্ডাৰত সম্পূৰ্ণৰূপে শাস্তিৰ ব্যৱস্থা আছে। আমি এই মনিটৰিং, যিখন পক্সো এক্টখন ভালদৰে ইমপ্লিমেণ্ট হৈছে নাই, আমি সেইটো মনিটৰিং কৰোঁ। তাৰপিছত যিখন আমাৰ আছে মনিটৰিং অফ জুভেনাইল জাষ্টিচ কেয়াৰ এণ্ড প্ৰটেকশ্যন অফ চিলড্ৰেন এক্ট, JJ এক্ট বুলি কোৱা হয়। এই জুভেনাইল জাষ্টিচ বা JJ এক্ট যিখন আছে, এই এক্টখনত শিশুৰ অধিকাৰৰ বিষয়ে সম্পূৰ্ণকৈ কোৱা হৈছে। আৰু আমি যেতিয়া শিশুৰ কাৰণে কাম কৰোঁ, এই জুভেনাইল জাষ্টিচ এক্টখন আমি সকলোৱে কম বেছি পৰিমাণে আমি জানিব লাগে, আমাৰ জনাটো দৰকাৰ যে আমি সকলোৱে জুভেনাইল জাষ্টিচ এক্টখনৰ বিষয়ে আমি জনা দৰকাৰ। আমি আমাৰ কমিশনৰ এই যিখন জুভেনাইল জাষ্টিচ এক্ট আছে, এই এক্টখনো আমি কিদৰে ইমপ্লিমেণ্ট হৈছে বা হোৱা নাই আমি মনিটৰ কৰোঁ। তো আমি যিখিনি চাইল্ড ৰাইটছ, মই খুব কমকে সৰুকে মই কথাখিনি ক'লো আপোনালোকৰ আগত। কিবা অসুবিধা হৈছে নেকি বুজোতে? বুজি পাইছেনে? কিবা এনি লেংগুৱেজ প্ৰব্লেম? এনি লেংগুৱেজ প্ৰব্লেম নাই হোৱা? ঠিকে আছে, ঠিকে আছে। পিছফালে বাইদেউসকল মাজে মাজে হাতখন দাঙিব, তেতিয়া গম পাম যে আপোনালোকে কথাখিনি বুজি পাইছে। নহ'লে মই আহি এনেই কৈ থকাৰ নিচিনা হ'ব। আৰু আমাৰ মেইন পাৰপাছ হ'ল যিটো আজি এইটো নলেজ ফেষ্টিভেল। চ' চাইল্ড ৰাইটছ ইজ এ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ইছ্যু, ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ছাবজেক্ট। অল অফ আছ শুড ন' এবাউট চাইল্ড ৰাইটছ। ৰাইটছ মানে বহুত বেলেগ কিবা ডাঙৰ শব্দ এটা নহয়। ৰাইটছটো হ'ল এটা চিম্পল শব্দ, আৰু আমি সকলোৱে ৰাইটছৰ বিষয়ে আমি এৱেৰ হোৱাটো দৰকাৰ, আমি জনাটো দৰকাৰ। চ' মই যিকেইটা মেজৰ মানে কম্পনেণ্টছ অফ ৰাইটছ, যিকেইটা আছে যে আমাৰ ৰাইট টু ফ্ৰী এণ্ড কম্পালচৰি এডুকেশ্যন, মই কৈছোৱেই, ৰাইট টু বি প্ৰটেক্টেড ফ্ৰম এনি হেজাৰ্ডাছ এমপ্লয়মেণ্ট। এতিয়া আমি যিবিলাক আছে আমাৰ ৰাইটৰ ক্ষেত্ৰত, শিশুৰ অধিকাৰৰ ক্ষেত্ৰত যিবিলাক আইন আছে, মই সেই আইনখিনিৰ কথাও মই ক'ম। আৰু তাৰ আগতে মই ক'ম যে চাইল্ড ৰাইটছ ভায়লেশ্যন এটা শব্দ শুনা পাব আপোনালোকে, যে শিশুৰ অধিকাৰ কেনেকে
অধিকাৰ খৰ্ব হৈছে বা অধিকাৰ ভংগ হৈছে কেনেকে হয় কোনোবাই ক'ব নেকি what is child rights violation কওকচোন প্লিজ শিশু অধিকাৰ কেনেকে ভংগ হ'ব পাৰে প্লিজ কওক কোনেও নকয় আচ্ছা আপোনালোকে যে এই চাইল্ড মেৰেজ বিলাক হৈ আছিলে আমাৰ চৰকাৰে এটা ষ্টেপ ল'লে চব ধৰিলে কি কাৰণে ধৰিলে বুলি ভাবে চাইল্ড মেৰেজ কি কাৰণে বন্ধ কৰিব খুজিছে কওকচোন কোনোবাই কওক বাইদেউ থেংক ইউ কওক বাইদেউ মানে ছোৱালীবিলাক কষ্ট হয় বিলো 18 ইয়াৰ্ছত বিয়া কৰিলে ছোৱালীবিলাক মহিলাবিলাক কষ্ট হয় বাইদেউ হয় এইটো কাৰণে থেংক ইউ বাইদেউ আৰু কোনোবাই ক'ব Thank you, ma'am. Basically, child marriage যিটো সময় হয় সেইটো দেখা যায় ক্লাছ 9 10ত বেছিকে হয় আৰু ক্লাছ 9 আৰু 10ত যেতিয়া চাইল্ড মেৰেজ হৈ যায় তেওঁলোকৰ প্ৰথম কথাটো হ'ল এডুকেশ্যনটো ব্ৰেক হৈ যায় আৰু এডুকেশ্যনটো ব্ৰেক হোৱাৰ পাছত বেছিকেলি ইটো এজন বেয়া হোৱাবিলাকৰ ফেমিলিৰ পৰা ছাপোৰ্টটো নাপায় At first, they have survived from their food and shelter. Basically. আৰু কিবা কাৰণত একেলগে থকাৰ পিছত যিহেতুকে চাইল্ড ৰাইট বা চাইল্ড যিটো মেৰিয়েজ হয় আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যন মতেদি যদি 18 ইয়াৰ্ছত ছোৱালী এজনে নিজে ডিচিশ্যন ল'ব পৰা বুলি ধৰা হয় আৰু পুৰুষ এজনে ল'ৰা এজনে 21 ইয়াৰ্ছত নিজে ডিচিশ্যন ল'ব পৰা বুলি ধৰা হয় গতিকে বিল' 18 ইয়াৰ্ছত তেওঁলোকে মেৰিয়েজত বহিলে গতিকে তেওঁলোকৰ এইটো এটা আৱেগিক সিদ্ধান্ত আছে আৰু এটা সময়ত আৱেগিক সিদ্ধান্তটো তেওঁলোকৰ মাজত পিছত এইটো বুজি পায় যেতিয়া তেওঁলোকে ছাৰ্ভাইভ কৰিব লাগে সকলো ফালৰ পৰা ছাপোৰ্ট নাপায় ছ'চাইটি এণ্ড ফেমিলি বহুত ধৰণৰ চাইল্ড ৰাইট বহুত ধৰণেৰে এফেক্ট হ'ব পাৰে থেংক ইউ so much এতিয়া যেনেকে ফিজিকেলি মেণ্টেলি হ'ব পাৰে মেণ্টেলি হয় তাৰপিছতে ফিজিকেলি হয় যদি ছোৱালীজনী প্ৰেগনেণ্ট হয় কম বয়সতে তেতিয়া তাই যিটো বাচ্চা জন্ম হ'ব তাই নিজেই মেচিয়ৰ নহয় বাচ্চাটো ইমেচিয়ৰ হ'ব তাৰপিছত মাল্টিপল প্ৰেগনেন্সি হ'ব পাৰে ফিজিকেলি মেণ্টেলি ফাইনেন্সিয়েলি চব ফালৰ পৰাই এফেক্ট হয় গতিকে চাইল্ড মেৰেজ ইজ এ চাইল্ড ৰাইটছ ভায়োলেশ্যন এটা চাইল্ড ৰাইটছ ভায়োলেশ্যন বুলি ক'লে আমি সাধাৰণতে আমি যিটো বুজো যে আৰ্লি মেৰেজ যিটো হয় আৰ্লি মেৰেজৰ যোগেদি চাইল্ড ৰাইটছ ভায়োলেশ্যন হয় তাৰপিছতে কেতিয়াবা কি হয় তাৰপিছত সেক্সুৱেল এবিউজ হয় যে সেক্সুৱেল এবিউজ বহুত ধৰণেৰে হ'ব পাৰে বেলেগ মই যিটো ক'লোৱেই যে কেনেকুৱা ধৰণৰ সেক্সুৱেল এবিউজ হ'ব পাৰে ডমেষ্টিক এবিউজ সাধাৰণতে কি হয় যে ঘৰতো হ'ব পাৰে আৰু বহুত আমি দেখা পাওঁ যে many children are abused at home when they are abused at home if they are abused at home if they are sexually abused the abuse is done mostly by the relatives ঘৰত থকা বা পৰিয়ালৰ মানুহে যৌনভাৱে নিৰ্যাতিত কৰে কিন্তু আমি গম নাপাওঁ পৰিয়ালৰ মানুহে গম নাপায় মাক বাপেকেও গম নাপায় আৰু নকয় ছোৱালীজনীয়ে হয়তো ক'বলৈ লাজ কৰে ক'লে কি হ'ব মাকে গালি দিব যে তই ইমান চঞ্চল তই সেইকাৰণে ছোৱালী তোক এনেকুৱা কাম কৰিছে বাপেকক নকবি বাবাক নকবি দেউতাক নকবি এনেকে ক'ব পাৰে আৰু নহ'লে তাকো নকবি কথাটো মনে মনে লুকাই থৈ দিয়ে আৰু কিছুমান যিবিলাকৰ পঢ়া শুনা কম ঠিক আছে তাইক বিয়া দি দিওঁ কিন্তু ক'বলৈ লাজ কৰে নকয় কিন্তু আজিকালি তথাপিও অলপ কোৱা হৈছে so most of the sexual abuse cases are কি হয় at the home ঘৰতে হয় ডমেষ্টিক তাৰ উপৰিও যে violence even at home and at school
স্কুলতো হয় আজিকালি আপোনালোকে জানে যে টিচাৰবিলাকে মাৰপিট কৰিব নোৱাৰে যিটো কৰ্পৰেল পানিছমেণ্ট কিন্তু আমি কি হয় যে আমি মাৰপিটৰ কথাটোহে কওঁ কিন্তু মেণ্টেলি যে বহুত বুলি কৰে বা মেণ্টেলি কয় যে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক বহুত কেছ আছে ছুইচাইড কেছ মই আপোনালোকক এটা সৰু এক্সাম্পল ক'ব খুজিছো এটা ছুইচাইড কেছৰ বিষয়ে মই ক'ব খুজিছো যে এখন ভাল স্কুলত ডাঙৰ স্কুলত এটা ছুইচাইড কেছ হৈছিলে এজনী ছোৱালীয়ে 5 তলা ওপৰৰ পৰা স্কুল আৱাৰ্ছত ওপৰৰ পৰা তলত পৰিছিলে ছুইচাইড কৰিছিলে যেতিয়া তাই ছুইচাইড কৰিছিলে তাইৰ হাতত এখন ছুইচাইড নোট আছিলে তো যিখন দুই পেজৰ ছুইচাইড নোট আছিলে তাই কিন্তু সেইখনত তাকো ব্লেম দি লিখা নাই কিন্তু কোনেও ক'ব নোৱাৰে যেতিয়া আমি এইটো কেছ স্বমত কেছ লৈছিলো লৈ আমি নিজে কেছটো কৰিছিলো কিন্তু আনফৰ্চুনেটলি কি হ'ল কোনেও ক'ব নোৱাৰে আমি টিচাৰক মাতিলো প্ৰিন্সিপালক মাতিলো প্ৰিন্সিপালে ক'লে যে মোৰ ইমান ষ্টুডেণ্ট আছে মোৰ 3000 ষ্টুডেণ্ট আছে মই তাইক চিনি পোৱা নাই কোনজনী ছোৱালী ক্লাছ টিচাৰে ক'লে ছোৱালীজনীটো আমাৰ দেখাটো ভালেই খুব ঠাণ্ডা ছোৱালী শান্ত ছোৱালী তাইতো আমি একো বেয়া দেখা নাই তাইৰ মাইণ্ডত কিবা চলি আছিল নেকি নাজানো বুলি ক'লে আমিতো গম নাপাওঁ তাইতো ভাল পুৰা নৰ্মেল বিহেভিয়াৰ মাক বাপেকক মাতি আনিলো বাপেকে ক'লে মইতো কামতে ব্যস্ত থাকো মাকেহে জানে মাকে ঘৰত থাকে মাকক যেতিয়া সুধিলো মাকে ক'লে মই তাইক ভালে দেখিছো তাইতো একো বেয়া দেখা নাই তাৰমানে টিচাৰে স্কুলক মাক বাপেকক ব্লেম দিলে মাক বাপেকে টিচাৰক ব্লেম দিলে কিন্তু আল্টিমেটলি ছোৱালীজনী মৰিলে নাবাচিলে যেতিয়া আমি ভাবিলো যে তাইৰ যিকেইজনী বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড আছিলে বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড কেইজনীয়ে এটলিষ্ট গম পাব তাইৰ মনত কি চলি আছিলে আমি বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড কেইজনী কণ্টেক্ট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলো তেতিয়া তাইৰ যিকেইজনী ফ্ৰেণ্ড আছিলে সেই ফ্ৰেণ্ডৰ যিবিলাক পেৰেণ্টছ আছিলে সিহঁতে ক'লে যে আমাৰ ছোৱালীক আমি এনেকে কথা পাতিব নিদিওঁ they did not allow their children to speak to us তাৰমানে চবৰে কথা হ'ল মোৰ বাচ্চাটো একো হোৱা নাই মোৰ বাচ্চাৰ একো হোৱা নাই কোনোবা বাচ্চা মৰিছে মোৰ বাচ্চাক কিয় হাৰেছমেণ্ট দিব so this is our mentality সেই ছোৱালীজনীয়ে 2 পেজৰ এটা ছুইচাইড নোট লিখিছে সেই ছুইচাইড নোটটো তাই ছুইচাইড কৰাৰ আগতে লিখা নাই বহুত আগতেই তাই লিখিছে প্লেন কৰি ঘৰত তাই লিখিছে ধুনীয়া একো ভুল নাই ধুনীয়া এখন 2 পেজৰ লেটাৰ লিখিছে তাইতো মৰাৰ আগমুহূৰ্তত সেইখন চিঠি লিখিব নোৱাৰে চ' she planned to die for a long time কিন্তু তাই যে ঘৰত এখন ছুইচাইড নোট লিখিছে না তাইৰ পেৰেণ্টছে গম পালে না কোনোবা স্কুলৰ টিচাৰে গম পালে and each one started blaming others so আমাৰ কি চলি থাকে বাচ্চাবিলাকৰ আজি ইয়াত আপোনালোকৰ বহুত মাতৃ আহিছে আপোনালোকৰ ঘৰৰ বাচ্চাবিলাকৰ কি চলি থাকে বা আপোনালোকৰ ঘৰত বা ওচৰে পাজৰে যিবিলাক শিশু আছে এডলেচেণ্ট বিশেষকৈ কিশোৰী সিহঁতৰ মনত কি চলি থাকে আমি নাজানো আমি বুজিবলৈ চেষ্টা নকৰোঁ ঘৰত কেতিয়াবা যদি কোনোবাই ল'ৰা বা ছোৱালীয়ে স্কুলৰ পৰা আহি মন মাৰি আছে আমি ভাবো যে তাৰ পেট বিষাইছে বা কিবা হৈছে গাটো ভাল লগা নাই কিন্তু তাৰ মনত বহুত ধৰণৰ কথা চলি থাকিব পাৰে ছোৱালীজনীৰ মনত বহুত ধৰণৰ কথা চলি থাকিব পাৰে আমি চিন্তা নকৰোঁ so যিটো স্কুলৰ তেনেকুৱা আমি we don't pay attention to our children so যিখিনি এনেকুৱা ধৰণৰ যে কৰ্পৰেল পানিছমেণ্ট মানে যিটো কয় অকল শাৰীৰিকভাৱে মাৰপিটে নহয় মেণ্টেলি যদি কোনোবাই টৰ্চাৰ কৰে that is also corporate punishment তাৰপিছত আমাৰ চাইল্ড
চিন্তা কৰোঁ যে আমাৰ গাঁওখনত চব বাচ্চা আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী সুৰক্ষিত হৈ আছে নে নাই যদি চব ল'ৰা ছোৱালী সুৰক্ষিত হৈ আছে কোনোবা চাইল্ড লেবাৰ আছে নেকি কাৰোবাৰ বিয়া হ'ব গৈ আছে নেকি কোনোবা নোহোৱা হৈছে নেকি ট্ৰাফিকিং হৈছে নেকি আমি যদি চকু দিওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ চব ল'ৰা ছোৱালী সুৰক্ষিত হৈ গতিকে মই চৰি লক্ষ্মী মই আপোনালোক সকলোকে অনুৰোধ কৰিছোঁ বহুত ক'ব লগা আছে সকলোৱে ক'ব মই এইখিনি কথা ক'লো আৰু বেছিক কথা ক'লো গোটেইখিনি আশা কৰোঁ আপোনালোকে বুজি পাইছে আৰু মই আশা ৰাখিছোঁ যে চাইল্ড ৰাইট প্ৰটেকশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোক সকলোৰে ইয়াত বহি আছে যিমান বহি আছে বাইদেউ ভণ্টি বা আমাৰ ষ্টুডেণ্ট যিমান বহি আছে সকলোৱে যাতে এটা ষ্ট্ৰং ৰোল প্লে কৰে এইখিনিকে মই কৈ মোৰ কথা সামৰিছোঁ ধন্যবাদ Thank you so much, madam. I feel really sorry to intervene and say that time is over, but that's the role I'm supposed to play as a moderator. So thank you so much. And आप सभी को एक सूचना देना चाहता हूँ कि जितने सारे अधिकार है, इसमें बच्चों का जो अधिकार है, so the movement started sometimes 100 years back in 1919 after post World War. Lady from England, Eglantine J, who started this movement. And then it took almost 70 years to translate that ideas into a declaration in the UN General Assembly. So 1919 to 1989 and then India ratified in 1992. So the journey जो है हमारा जो lessons है हमारा जो knowledge है हमारा जो experience gain किए हैं over this child rights issue is quite rich. And when we are talking about rights, again, rights are universal in nature. They are inalienable. And it's not that, first we'll address education rights, second we'll go address health rights. They are interdependent. एक के साथ दूसरे का जुड़ा हुआ है. ऐसा नहीं है कि, हम शिक्षा के बारे में पहले बात करेंगे and then next we'll go and talk on health. So we need to understand this factor when you are designing, आप जहाँ पर भी हो, आप जिस दायित्व में हो जैसे कि मैडम ने बता रहे थे all the different characters she explain it whether it is advocate or teacher or ASHA worker आंगनवाड़ी worker or ANM और parents हम सभी का दायित्व है अब इस दायित्व को समझना बड़ा कठिन व्यापार है I know and the moment we understand that this is our responsibility then we need to share that responsibility in a framework what in your management language called coordination and convergence. So without further delay, may I now invite Ms. Mana Tanka from Munakata Foundation, Japan, to share her thoughts and experience in this others gathering. Over to you, ma'am. Hello, everyone. Hello. First and foremost, congratulations on the Bodoland Peace Accord. I came to Bodoland 2006 first time, then 2019, 2020, and here today. I'm so happy the world registered दुनिया को सब पता होगा अभी बोडोलैंड is a peaceful place. Congratulations. सबसे पहले तो इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ मेरा नाम माना है माना तानाका from Japan. 2006 मैंने यहाँ आई थी लेकिन इससे पहले 2002 से 2005 तक मैंने राजस्थान में काम करती थी एक संस्था इफ्ता था उसका नाम वो गर्ल चाइल्ड एजुकेशन और वहां में मेरा सैलरी मिलते थे महीने में 4,000 का आपको पता होगा दुनिया में हर जगह में दो प्राइस होती है अगर ताजमहल में जाऊंगी आज अ जापानीज फॉरेनर 500 रुपया मांगते लेकिन अगर लोकल होती है ना तो 20 रुपया तो
मैंने यहाँ आने से पहले से हमेशा बताती हूँ, मैं असमी हूँ, क्योंकि 20 रुपया में मैं अंदर आ सकती हूँ। तो मैंने हमेशा सोचा I'm not Japanese, मैं दिल से असमी। So today, it's a very rare occasion to talk about the children who have been neglected, who have been not included into the society or not considered. Let me start. This is a presentation about the sexual orientation and gender identity of the child. But let me start from the story of a child in Japan. Something familiar. Live with expectation. I will show you some photos you have never seen, which is about the Japanese children in primary school. When every child enters the primary school, there's the one thing they need to do. Selecting a school bag. And in Japan, you will use the same strong school bag for 6 years studying the primary education. So this is actually the documentary that asks every child to enter the shop alone and select a school bag. All of them are 5 years old. She selected pink. You can see her hairs. She also put pink hairband. He selected black with a red stripe on it. And their parents are watching them selecting their school bag in a different room. And their parents, after the selection is over, is told by one card. The school bag a child has selected is not what they want. We ask your child to select what your parents want you to buy. Now let me go back. She said she selected brown because she thought her mother will like this color. She always says select the color which is easy to clean. Brown, black, something which is easy to clean. So she said, I think my mom will like it. She said, my mom loves pink color. She always says pink is the cutest color in the world. So I selected pink. And he said he selected black because black is a cool color and he's sure his father will love it. Now let me go back to the same demonstration. After parents showed this card, there is a second trial. Now child is asked to pick the bag you want. Look at her, she looks now so happy. And the girl who picked up the brown color now picked up pink. The pink color she picked up, she now picked up blue. She tried it on, she likes it. And he likes pink. And their parents come. And this is how they look. The message I like to say is the assurance of parents or adults are so critically important for every child. Every child tries to live with expectation of parents. They read your minds. About the sexual orientation and gender identity, there are many unconscious bias parents have, which they didn't even realize they are forcing children anything because it's unconscious. Something like the gender expression, shoes, color of uniform, friendship. You know, you're a boy, you always play with boys. But there are some boys who like to play with girls,
playing with toys, playing with dolls. But always the parents just expect or just have a conscious mind that the boys always play with boys and girls always play with girls. Shoes, uniform, and even the name and nickname. I have many queer friends in Japan. And there are so many times I was told that when I was kids, I did not like my name because it's so boy or because it's so girl. But they get adjusted to it. Even one of my friend's kids, he was a boy. When I asked him what you like to be in the future, he said, I want to be a princess. There are many boys actually who dream to be a princess, who dream to be a queen one day. But parents just ignore it. It just never crossed their mind how many boys would love to be a prince, how many girls would love to be a princess. I'm sorry, how many boys want to be the princess, how many girls want to be a prince. So what's happened is a child will constantly adjust their names, adjust to their names, adjust to their pronouns, adjust their dreams, colors, shoes, everything they select, even at the age of 5, they are adjusting. They're trying to make you happy. And what's will happen for the child? These adjustments, small adjustments here and there, will actually leave the child with so much insecurity, so much self-doubt. Maybe I'm the only boy who wants to be a prince. Maybe I'm the only girl who loves to wear black. This unconscious bias really resulted into the child feeling insecure, feeling doubt about oneself, expressing herself or himself. So now I'd like to go into the part of a gender identity. Of course, everyone knows that biological sex, whether you're a boy or girl, male, female, there are a few percentage of people when they born, they have a those features, so they are called intersex. However, majority of them has a biological sex. Then the gender identity comes. Gender identities are something inside you. Nobody knows. But you feel you as a male or a boy. You feel whether you feel like a girl or a female. And if your biological sex and your gender identity is same, which is for me, for example, it's called cisgender. And if it doesn't match, you biologically born as a male, feeling female, biologically born as female, feeling like a male, then we call it the transgender. Not the cisgender, but the transgender, or nowadays called non-binary. However, you need to be very careful when you're dealing with kids because there are a huge part of it which is undermined nowadays, but become very important is a gender expression. Many people feel a little bit freaked out or feared your child might be a transgender. However, there are so many layers before someone creates the identity. And gender expression is something different from gender identity. Cisgender or transgender, it doesn't matter nowadays, at least in many countries. You are free to express yourself. If you watch TV, there are cross-dressing, the male dressing like a female, female dressing in a tuxedo. Cross-dressing become very common among the celebrities.
There are many smooth skin products for the male nowadays. If you watch Korean movie stars, Korean pop stars and singers, look at them. All of their boys' skins are so smooth. Those products become very common. It doesn't mean they're transgender, but their gender expression is a little bit more feminine and different from before. It really doesn't matter whether it's cisgender or transgender. You are free to express yourself. Many kids start saying they don't feel comfortable using the bathroom unless otherwise it's independent and separate. It doesn't matter whether you're boy or girl. Many people feel uncomfortable changing the clothes in school unless there is an independent verb. Cooking is very popular. I visited the boarding school in boys' boarding schools in Africa several times. I was many times told that the most popular subject among the boys' boarding school is cooking. Gender neutral color become very popular too. So important message parents and we need to understand is gender expression is so diverse and you're free to express yourself. You don't need to fear about your gender identity judged by that. There are many challenges for the queer child. I personally met a child, maybe 3 or 4 years old in Kolkata. I was working in a school in the slum area and lots of poverty, so we learned the free school. And Gautam always came with his transgender woman's aunt. And Gautam doesn't belong to the poverty. Gautam was from actually the very rich family. But the point is the child, not only the queer child, but the child with queer family members, they face a similar challenge when it comes to the school rules, uniform, sitting arrangement, the females sit here, boys sit there, swimming, and the hairs and shoes. Teachers and textbook. Not a single school has a really sound school counselor who understands the queer child or the children with queer parents or queer family members. No private space. If you open the book, textbook, have you ever seen even the one bio says that the sea lived as a lesbian and completed this book? You do not find the role models in the textbook. And no awareness among teachers. It is mostly the teacher's fault those kids drop out from the school because not the proper protection and awareness are made by teachers. Of course, among kids, there are lots of peer pressures. There are problem of the name calling in a different way or outing. If you tell another boy that my mom is like this and that, and another boy tell another kids. Of course, among kids, there are bullying and so many challenges for the queer kids. But on top of it, teachers, textbook, and school rules and environment are not friendly for queer child. And same challenges for any children with queer family members or relatives. And queer children has been neglected in the child protection too. I worked in World Vision before. I worked as the project manager of World Vision Ethiopia. And I know so many people in the Save the Children, Care, Oxfam, Plan International who have been working for the child protection. Before I start the Munakata Foundation, we are supporting the human rights of queer people. I asked my colleagues, I asked many people actually around that, do you protect the queer kids or do you have any project supporting the queer kids? All of them saying no. SOGI, sexual orientation and gender identity is of course not included into the Sustainable Development Goals because among the UN nations, there are 72 countries still
homosexuality and sexual orientations are crimes. So SDGs or whatever comes in future under the United Nations, most likely they will keep failing to protect a queer people. Soji harassment is everywhere and Soji violence is everywhere. Munakata has been supporting of refugees. There are a 17 years old boy who was in a boarding school in Kenya, and he was unfortunately found with another boyfriend, and he was kicked and lynched and then moved into a different country. He became refugees at the age of 17 because he was just simply with his boyfriend. Social violence and crimes and harassments all over the world. This area has been neglected grossly. Let me go into the sexual orientation briefly because this is not a part of the child, it's more like the addressor, but it starts early. The feeling of attraction, which is biological sex and gender identity, and then on top of it, sexual orientation. There used to be only two words used for the sexual orientation. If you were born as a male, was there gender identity or male or female, like a transgender or cisgender, but as long as you're attracted to the same sex, then you are called traditionally homosexual. We don't use this word anymore. We do not use this word anymore. It's very pejorative. But it used to be the homosexual and the rest of people are heterosexual. But now it has been changing, as you may heard, like the gays, lesbians, bisexuals, pansexual, queer. There are many different ways of saying it, and also questioning non-binary, asexual, demisexual, like you're not attracted to any members at all, or you're only attracted after some time. There are so many different ways. If you open the Facebook and try to register your sexual orientation, I mean, you will find like a 42 different categories that you can never catch up. So what it really seems is like this. There are so many things, and the sexual orientation are so diverse and ever-changing. Let me finish my presentation going back to the slide. Just remember this boy, right? It's too early to say whether he will be a gay or queer or transgender, but it really doesn't matter. Look at him when he selected the color he wanted. You can see how happy he is. And even look at her selecting her own color. How happy her mother looks. It's only when you come to know queer kids and when they are expressing themselves, you realize that how happy they are, how true they are. Then that will make parents happy too. It's just our awareness. It's just a color. It's not a big deal. And the world has been changing. It will ever changing. So don't worry. Just leave a color you want. Thank you very much. Thank you so much, Mana. Actually, you help us. I mean, people, those who are present today in this deliberation, you actually challenge us. You remind us about our role as a stakeholder, whether this category of children are there in your planning process. Are you addressing their needs when you are designing the program? Because when you are talking about rights, अधिकार के बारे में जब बात करते हैं, and शिशु अधिकार और बच्चों का अधिकार हक के बारे में जब बात करते हैं, see, rights are there everywhere. You know, the basic philosophy जो pillar है वो है the rights, all children have same rights, same set of rights.
everywhere and all time. Kindly underline these three things. All children have same rights everywhere and all time. Now, if this is the guiding principle and which the UNCRC, United Nations Convention of Rights of Children, which is very clearly articulated in that 54 articles, now we have to think that whether the group what Mana referred, whether they are in our planning process or not. Are we thinking about them in our, do we have such category of children in our village, in our community setting, in our own family? Then if they are there, then what are we doing as informed citizen? So thank you so much again, because you also touch upon the role of stakeholder, particularly there are many ICDS workers are there since you deal with children at the early stage, particularly the childhood and the transition you manage from childhood to adulthood, both teachers as well as the ICDS workers. Us how as a stakeholder we need to be sensitive in designing our. You also touch upon the social norms, the unconscious is very much prevail, which is invisible. हमें हमारा आंखों में वो दिखाई नहीं देता रहा है, ये जो and then but still we practices and how do we overcome it? My speech I mentioned about we need to understand the deprivation, we need to understand the vulnerabilities. This is where it fits, and when I look at the UNCRC articles, article principle of non-discrimination. Article also talk about other articles which is right to right to all these points that you mentioned in your 20 minutes talk actually link with these articles of UNCRC, and also it is well reflected in our national policy for children. With this, may I now invite our dear friend Miguel Das Cuellar, who represents the director of USCHA, to share his thought and experience and the work he's been doing in Assam context. Over to you, Miguel. Thank you, Lakshmi. A very good afternoon to everyone. Can you hear? Are you interested? Little behind? Can you hear me? You can, right? English, Hindi, Ohomia. Kundu ko bole ibo. Aur दूसरा को kundu ko bole ibo. Hindi. हाँ. तो मेरा हिंदी तो मना के जैसा अच्छा नहीं है, बट मैं कोशिश करूंगा. मेरा टॉपिक दिया गया है. हम तो सरकार के नहीं है. पहले यहाँ सारे सरकार के लोग हैं क्या? सब सरकार के हैं. सरकार के कितने हैं? और स्टूडेंट्स कितने हैं? यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं. और मैथ के कितने नहीं है? सब मैथ्स के हैं. एक दो तीन नॉन मैथ्स. Very nice. Why is only math people here? I would expected more sociology, social work, right? कोई बात नहीं. तो मेरा टॉपिक है कि सिविल सोसाइटी, मतलब जो लोग समाज जैसे हम और आप, हमारा क्या रोल है, हम क्या कर सकते हैं चाइल्ड राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, है कि नहीं? ये मेरा सब्जेक्ट है. तो ये डिस्कशन में इस तरह से शुरू करूंगा 3 लेवल में. सब बोल रहे हैं शिशु अधिकार, चाइल्ड राइट्स, शिशु अधिकार बोल रहे हैं. घर में आप में से जब आप छोटे थे कितनों ने पिटाई खाया था मम्मी पापा से? हाथ उठाए. हाँ तुम पड़े हमारे कैसे? हाँ बोले कैसे? बोले कौन है? वेरी प्राउड. टीचरों पर गुना कैसे? उत्तम मध्यम. गाली गुना कैसे? कान सभा गुना कैसे? হয় না? সবেই খাইছে, হয় না? বিভিন্ন ধৰণৰ. আগতে এইটো সম্ভৱ আছিলে.
হয়নে? ছাৰে 1 লাখ মাৰিব তাৰপিছত গৈ ছাৰক গৈ পেলাই নমস্কাৰ ছাৰ কি খবৰ হয়নে? এতিয়া विश्वजुड़ी ये चेंज हुआ है। अभी যদি মন যায় কোনো মানুহে কোনো বাচ্চা ঘৰত বা স্কুলত मारपीट বা किसी भी तरह के मानसिक अत्याचार ये अभी क्या बोलते हैं बेआईनी मतलब गैर कानूनी हो गया है। तो अभी ऑप्शन है कि बच्चों को अगर किसी भी तरह का मानसिक शारीरिक घर में स्कूल में जो अगर होता है तो वो सुरक्षा मांग सकते हैं और वैसे सुरक्षा एक सरकार को देना होगा। समझ में आया? यहाँ कितने माँ बाप है, कितनों के बच्चे हैं और कितने माँ बाप अपने बच्चों को लगाते हैं कभी कभी? हाँ कितने? ठीक से राइट हुए एकदम बहुत कम किंतु एटू कमाब লাগিব हाँ कारण आजिकाली बाচ্চা मारपिटটো কৰিব নোৱাৰে। सो শিশুৰ অধিকাৰৰ যোনটো ডায়লগ সেই ডায়লগটো ষ্টাৰ্ট হয় ক'ৰ পৰা? নিজৰ ঘৰৰ পৰা। মানুহে খুব কয় ইটো ঘৰত যদি হুলস্থুল হয় নহয় কাষৰ ঘৰে গৈ ইমান বেয়া কয়নে? আহি নিজৰ ঘৈণীয়েকক ৰাইট লেফ্ট হেণ্ড চেণ্টাৰ মাৰি দিব আহি পেলাই। শুনিছেনে নাই? শুনিছে ন? এইবিলাক বস্তু এই ডুপ্লিচিটিটো আমাৰ সমাজত সেকেন্ড গ্ৰুপটো হ'ল যোনটো সামাজিক গ্ৰুপ ঘৰ আমাৰ কমিউনিটি। আমাৰ কমিউনিটিত কি হৈছে আমি সবে ডুপ্লিচিটিত বিলিভ কৰো, হিপোক্ৰেট। লাচিত বৰফুকন ইয়াতেও ক'ব গ'লে হিৰো উপেন ব্ৰহ্ম সবে একদম উপেন ব্ৰহ্মৰ হেৰিদিনা লাচিত বৰফুকনৰ হেৰিদিনা সবে বি লাচিত কৈ পেলাই ফেচবুক ভৰাই দিব। কিন্তু সেই বি লাচিতটো মানুহটো যোনে লিখিছে তাক যদি কোৱা যে তুমি চাইল্ড লেবাৰ দেখিলে তুমি ৰিপৰ্ট কৰিবা, সি ক'ব মই ৰিপৰ্ট কৰিম কিন্তু মেৰা নাম नहीं आना चाहिए। লুকাই লুকাই ৰিপৰ্ট কৰিম, ভয় খাই থাকে। সো কি হৈছে ইয়াৰ ফলত আমাৰ সমাজখন এটা ভয়াতুৰ সমাজত পৰিণত হৈছে। আজিকালি অপৰাধীয়ে দপদপাই ঘূৰি ফুৰে, ৰেষ্টুৰেণ্ট গৈ কি হোটেল সিগনেট এইবিলাকত গৈ পেলাই খানা खाता है और बच्चा जिसके ऊपर जो जुर्म होता है क्राइम हो যাৰ ওপৰত সি এটা শিশু গৃহত বছৰে বছৰে বন্ধ হৈ থাকিব লগা হয়। মই নিজে দেখিছো পক্সো ৰেপ কেছত বেল পাই পেলাই অপৰাধীয়ে মোৰ লগত ওচৰৰ এখন ৰেষ্টুৰেণ্ট খাব গৈছো, সি ধুনীয়াকে খাই আছে, নুডলছ চাওমিন খাই আছে, কিন্তু যোনগৰাকী শিশু আছে তাই এটা শিশু গৃহত থাকিব লগা হৈছে। কিহৰ কাৰণে? কাৰণ আমাৰ সমাজখন এটা ভয়াতুৰ সমাজত পৰিণত হৈছে আৰু সেইবাবে অপৰাধীয়ে দপদপাই ঘূৰি ফুৰি আছে। और क्या हमारे शिशुসকলৰ অধিকাৰ रक्षा करने में हम लोग व्यर्थ हो गए हैं। सो बाहिर प्रॉब्लम टू चोৱাৰ আগতে प्रथमे निजक चाब रातिपुৱা उठी पेলাই। फर्स्ट हमको देखना है सभ्य समाज का रोल क्या है शिशु अधिकार में। आमी की करूं प्रथमे हम क्या करते हैं। दूसरा एक फैमिली जो है वो फैमिली क्या करता है, वो बच्चों को सुरक्षित देता है कि नहीं। स्कूल नपठाए कोने नपठाए, बाहिर मानुहे नपठा নহয় হয়নে নহয়, কোনে নপঠায়, মাক বাপেকে নপঠায়। বহু কেसेसত বিয়া দিয়ে, কোনে বিয়া দিয়ে, মই এপ্লাই কৰিম হৈ এপ্লাই দিও, কোনে দিয়ে বিয়া, নিজৰ পৰিয়ালে নিজৰ মানুহে দিয়ে। ৰেপ ধৰ্ষণ ৰেপ কেছ কোনে सबसे বেছি কৰে কওকচোন। চিনাকি নিজৰ বিশ্বাসী মানুহে কৰে।
নিজৰ দেউতাকে কৰে, নিজৰ ককাকে কৰে, নিজৰ মামাকে কৰে, নিজৰ মামাৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ডে কৰে। So এইবিলাক কোন হয়? तो जेतिया समाजखনত ऐसा जब होता है अपराध, हम उंगली दिखाते हैं बाहर, पर 3 उंगली हम लोग के तरफ है। तो जेतिया इंडिया এটা रेप केस হয়, मैं रेपिस्टक दुख दे दियो, मैं को जे हम फेल हो चुके हैं अपने बच्चे को सुरक्षा देने में। So first thing is, as a civil society role is to reflect, to look into the mirror. আমি আমাৰ ঘৰ পৰিয়াল কেনেকৈ চলাইছো, বাচ্চাৰ সন্মুখত ডাঙৰ ডাঙৰ ঘৰৰ ল'ৰা ছোৱালী পেৰেণ্টছ ভেৰি এডুকেটেড, একদম বিদেশে পঢ়া, নিজৰ বাচ্চাৰ সন্মুখত हस्बैंड और वाइफ का जो मारपीट होता है और वो बच्चा बेचारा सोचता है ये क्या हुआ। जब वो बच्चा जाके स्कूल जाएगा और अपना दोस्त को एक थप्पड़ मारेगा, मम्मी बोलेगा, पहले उसको थप्पड़ मारेगा और बोलेगा उसको थप्पड़ मारना बुरी बात है। तो ये सब हम लोग को सोचना होगा कि बच्चों को हम क्या सिग्नल दे रहे हैं। समाज को थोड़ा बलवान होना होगा, ভয়াতুৰ হ'ব নালাগে এতিয়া, কাৰণ এইবিলাকৰ কাৰণে কি হৈছে, আমাৰ সমাজত শিশুৰ বিৰুদ্ধে ক্ৰাইমছ বাঢ়ি গৈছে। বাচ্চাই ক'বলৈ ভয় খায়, হয়নে? সো এইবিলাক বস্তু আমি নিজকে প্ৰশ্ন কৰিব লাগিব। এটাতো আমি কিমান জেণ্ডাৰ সেনসিটিভ, আজি খুব আই এম ভেৰি হ্যাপি যে এই পেনেল বিলাকত নহয় জেনলি খালি মতা মানুহ বহে, আজি বেছি নাৰী আছে। It's a very good sign. But যেহেতু বিষয়টো ইমান সংবেদনশীল, মই এক্সপেক্ট কৰিলো হয় যে আমাৰ অডিয়েন্সত আৰু মতা মানুহ থাকিব লাগিছিল, কাৰণ ম্যাক্সিমাম পারপেট্রেশন অফ ভায়োলেন্স কামস ফ্রম a man, right? কাৰণ জেন্ডাৰ হেবোৰ খুব আমাৰ আনইকুৱেল হৈ আছে। সো হেতু আৰু এটা ৰিজন, আমি এই সৰু সৰু বস্তুবিলাকক চাব লাগিব परिवार में, सोसाइटी में। So, खूब इम्पोर्टेंट। थर्ड, सरकार, हमार सरकारी व्यवस्था तो एनुकुआ जे सरकार को जो राइट्स है वो सुरक्षित करना है। पर क्या सरकार सुरक्षित करता है 100%? सरकारी বিষয় বাৰু ক'ব নোৱাৰে, স্টুডেন্টসে ক'ব পাৰে চৰকাৰে সব কৰে জানো? হা কৰে নে নকৰে? সবে ভয় খাই আছে ক'বলৈ, ভয় খাব নালাগে। We are very close partners, আমিও সরকার খুব close partners, কিন্তু as civil society, as public, আমার আৰু এটা দায়িত্ব হ'ল যে আমাৰ যিবিলাক অধিকাৰ যিবিলাক আমি পাবলৈ সক্ষম নহওঁ, जो हमको नहीं मिला, हमको वो मांगना होगा, है कि नहीं? अगर हम एजुकेशन के बारे में बात कर रहे हैं, बोरोलैंड में ही हम लोगों ने बहुत स्कूल में गया है। अगर एक स्कूल में 100 बच्चे हैं और 2 टीचर हैं, तो उस कम्युनिटी को सरकार को रिक्वेस्ट करना होगा। सिस्टम तो बने हुए हैं, पर सिविल सोसाइटी हैज टू गो एंड रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट एंड शो द गवर्नमेंट दैट हम लोग का ये सारा गैप्स है, ये प्रॉब्लम्स है। कारण गवर्नमेंट सबरे চাই থাকিব নোৱাৰিব গৈ পেলাই, হয় নহয়? তো দায়িত্ব আছে সৰ্ব সমাজৰ যে তেওঁলোকে যিবিলাক जो प्रॉब्लम्स है समाज में, वो सरकार को टाइम टू टाइम बताते रहे, रिप्रेजेंट करते रहे। हे কাৰণে এসোসিয়েশনস যে ফর্ম কৰা হয়, এনজিওস ফর্ম কৰা হয়, এইবিলাক আৰু এটা খুব ইম্পৰ্টেন্ট ষ্টেক হোল্ডাৰ, যোনে গভৰ্নমেন্টক সময়ে সময়ে এইবিলাকৰ খবৰ দি থাকিব লাগিব। বাচ্চাৰ যদি খাবলৈ পানী নাই এখন গাঁৱত, कहां जाएंगे हम लोग? सो सिविल सोसाइटी का दायित्व है कि वो जाके वो सरकार को वो रिप्रेजेंट करे कि हम लोग का है नहीं। अगर एक स्कूल में बहुत मारपीट होता है बच्चों के खिलाफ, हमको सरकार को जाके बताना होता है। जैसे बाइडो यहाँ है, एक सरकारी एजेंसी है, सो हमको उनको रिप्रेजेंटेशन देना होगा
है कि नहीं, या हम चुप रहेंगे? But problem is that so government is responsible, and you and I have to go and represent the concerns of the poorest of the poor, people who are marginalized. So a daito kini mon rakhiba, especially students, very important. A social issues board discuss kora, tarpor action loa. These are, you also constitute a very important group, or else change nahi aane wala hai. যদি আমি সবে কো যে মূল কি যায়, মেরা কে যাতা है, বাট সমাজখন আনফৰ্চুনেটলি হেনেকুৱা হৈ গৈছে। মোৰ চাকৰি, মোৰ খোৱা বোৱা সব থাকে, ঠিকে হ'ব, কিন্তু বেলেগৰ ঘৰত যি হওক সিহঁতৰ কথা হয়নে? আজি যিবিলাক প্ৰব্লেমছ, বিশ্বাস কৰক, প্ৰব্লেমছবোৰ আমি নিজে আমাৰ মাজত আনিছো। সো নেক্সট টাইম যেতিয়া প্ৰব্লেম এটা দেখে, শিশুৰ ওপৰত যেতিয়া ভাইলেন্স দেখে, আপুনি নিজকে ক'ব যে মই এই শিশুগৰাকীক সুৰক্ষা দিবলৈ সক্ষম নহলো, আই ফেইল। যেতিয়া সেইটো ক'ব, the moment you say that, আপুনি start কৰিব to unite, to congregate, to discuss, to reflect, to protect our children in the community. সেইকাৰণে NGOs বোৰ খুলিছে। মানুহে কিয় NGOs খোলে? কাৰণ সেই কমিউনিটিত গৈ পেলাই মানুহে গম পাইছে যে এই प्रॉब्लम डांगर प्रॉब्लम है और उसका समाधान लाना है हमें। हमने एक एनजीओ खोला, क्यों खोला? हम लोग चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज के लिए खोला है, क्योंकि हमने खुद चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज के विक्टिम्स रह चुके हैं। तो चेंज अगर लाना है तो अपने से लाना होगा, और ये सब रोल्स है सिविल सोसाइटी के। याद रखना होगा, नंबर 1 योरसेल्फ, नंबर 2 योर फैमिली, number 3 the community, and number 4 the government should all come together as one team to address all the child protection issues. So from now on I request you सबको कि प्रॉब्लम बाहर मत देखिए, प्रॉब्लम अंदर देखिए। अगर सुबह सुबह उठ के बोल सकते हैं कि मुझे अच्छा लग रहा है देखने, ये अपने आप को देख के, अपना कन्विक्शन, अपने प्रिंसिपल्स ठीक जगह है, तो आप इस सोसाइटी में बच्चों के लिए चेंज ला सकते हैं। ट्रांस आइडेंटिटी के ऊपर आज बात हुआ। कौन चिढ़ाते हैं ऐसे बच्चों को? हम लोग ही चिढ़ाते हैं। हम लोग भी बोलते हैं कि कौन ये माइकी है, हाँ ये वो है, और ऐसे can you imagine the status of woman? ताकि माइकी को tolerance status और इन्हें तो माइकी is basically a गाली almost. I have heard women say in commerce college, हम एक चीज खरीदने गए थे एक दुकान में, there is a mother and young mother and a child. So then what happens is there was this trans person who was also shopping. वो कुछ खरीद रही थी, तो बच्चा became curious, you know what the mother said? Hey, माइकी है जो नहीं होगा। She herself is a woman, as if माइकी, so this child will go up to perpetuate violence. Sexual abuse सिर्फ लड़कियों के साथ नहीं होता है, लड़कों के साथ भी होता है। लड़के क्यों नहीं बोलते हैं पता है? क्योंकि मर्द को दर्द नहीं होता है, ये समाज एक्सेप्ट नहीं करेगा। So that boy child also has to hide inside. So one has to break, keep your convictions in place. If আজি যদি আমি সুৰক্ষা, child rights, human rights কৈ থাকো, ঘৰত গৈ পেলাই আমি trans women and see মাইকি হিজৰা কৈ দিও, your conviction is in the wrong place. Your values are in the wrong place. Aji students of kami jodi ahi pelai ko je domestic violence is a bad issue. Moi nije goi ke nijor wife ko go ekdom right, left and center maru. My conviction is in the wrong place. Hekarne ki hoise samajkhon aji loke stable hobo para nai because of individuals. So with this
I would request all of you to come together and start the reflective journey from yourself. The day you're ready, you know yourself, you're in touch with your reality, you will see change will come, and our society, our communities, our schools will become a much safer for children to live in. Till then, we just can wait and hope for the best and do as much as we can to support the rights of children. With this, I thank you, and I hope that you will successfully take this message home. Thank you so much. Thank you, Bolan University. Thank you, Miguel, for your speech, energizing speech. And this reminds me, Father Paulo Freire's, kitab, jo hai, Pedagogy of Praise. I don't know how many of you have read it, but if you have not read it, please purchase this book and read it. Role of civil society is very, very important, and particularly in the last 30 years, if you look at it, the journey of civil society is no longer confined to registered NGOs. There are n number of institutions which comes under the definition of civil society, and including the self-help group, which presently Government of India or Government of Assam, they are thinking as a major vehicle and tool for empowerment and disseminating message and bringing change, social transformation. They also comes under civil society. And the role of civil society, when I reflect particularly in Assam context or elsewhere, our job is to, show paths. As he said that, we have to show mirror and reflect that, yes, things are not in order, and this is how things needs to be done, and how it needs to be done. Then there also, through demonstration, through field demonstration, through pilot project, through evidence generation, we help state government, we help national government. Yes, this is a problem. This is how we work in a particular context, and this is the result which we have received, and this needs to be replicated elsewhere with the larger policy and program framework. The role of civil society also, when I look at it, report, reflect, and disseminate knowledge, make people aware, bridge the gap between community and the systems. And systems, when I say system, all of us, we represent different systems. And system here I am referring about whether it is the government, whether it is the line department, whether it is the judiciary, whether it is media, and also in Northeast context, I am aware of this fact that the customary laws, which plays very important role, particularly in the context of when you are talking about certain practices, which are there from one generation to another generation, it is just passing through unwritten forms and norms. We need to address that. And in the other session, seminar hall 4, we discuss about social behavior change, communication, how it play an important role. Here I see the role of civil society also to help community to bring the attitude change in their mindset about the deprivation and multiplier. With this few words, I once again thank Miguel and invite Professor Ursula. She is not well, unable to speak, but she has promised. Look at the commitment. And as I mentioned, academy has a major role to play when you are talking about realizing the rights of children, because this is the industry. I would say that which produce all of us. I mean, all of us, we are part of the educational institution, and role of academician and academic institution is very critical, because if you look at the workforce when I say whether it is police workforce or it is the departmental workforce or workforce within the judiciary, I mean all of us, we are part of the workforce, and child protection workforce in particular, all of us, we come from the educational background at some point of time, and university has a major role to play. And here in Bodoland University, we have one partnership which the idea is that how do we integrate, how do we merge child rights or child protection rights of children in university course curriculum. So we have Professor Ursula who is with us. She's going to speak in few minutes
about some important message. Let's listen to her. Respectable audience, respectable panelists, I will use the voice of Sir Victor Nazari to present my presentation because, as you might hear, I will not be able to speak to you, unfortunately. So I feel very honored to be here, and I would want to, even if the situation in a country like Germany is very much different to a situation in a country like India and in a region like Bodoland, there are some similarities. And one similarity is that the rights of children are universal everywhere, and the other similarity is that the rights of children are violated everywhere. And so, because this is true everywhere, we can also speak together and maybe find solutions together. And one solution that Frankfurt University was trying in order to improve the knowledge of social workers was to integrate a module, a special module on child rights and child protection. Our university Department of Social Work is collaborating with the ASEAN Don Bosco universities in 7 years, and we have decided to work on a similar module at the ASEAN Don Bosco University, which is not similar in content because of the differences, but maybe similar in the structure and in the ideas, the underlying ideas. So I would like to invite Sir Victor to present my presentation. Thank you, Victor, and thank you for your patience. My, uh, thank you, ma'am, for this opportunity. But I hope that you will get well soon and recover fast. And Boro na Assamese. How many Boro? How many Assamese? I will try to do both. Maybe I will succeed. But it is a great honor, I must say, to share with you the ideas of Professor Ursula Kasselt. And I have had the rare privilege of working with man for this many years, as he has expressed. And these ideas that have finally taken shape into concrete action in a university setup is a very welcome news and a very welcome step, not only for ASEAN Don Bosco University, I feel, but also in the context of university setups across Northeast India and the whole of India. And I would like to congratulate the team at the ASEAN Don Bosco University and also the Frankfurt University of Applied Sciences, Frankfurt, Germany, for coming up with this wonderful initiative. So I will be sharing Men's presentation in Bodo and Assamese. दिनैहाय बेयाव साफ्रोमबो नोंथांमोना जोंनि बिब' बिनानाव बिदा फंबाय आरो उन्दै गथ'फोरखौबो नुदों आङो सानै साथाम जोबोद मोजां मोनदों नोंथांमोना बेयाव सफैनो हानायखाय मेडामा दिनै लोमजादोंसो हय किन्तु आङो जेब्ला फ्रेंकफर्टआव थांदोंमोन जार्मानियाव मेडामा आंखौ एयारपर्टनिफ्राय लांफैदोंमोन आरो जेब्ला मेडामा गुवाहाटीयाव फैदोंमोन बे समावहाय आङो मेडामखौ लानानै गुवाहाटी साखाथि गामिफोराव गारि सालायनानै बेरायहोदोंमोन जेब्ला आं आसामाव गारि सालायदोंमोन मेडामखौ फज'नानै बे समाव आङो सानदों आङो गारिखौ जोबोद मोजाङै सालायनांगोन लासै लासै सालायनांगोन
मेडामा बिराद सेनियर ओमफ्राय आरो मेडामा जोबोद जोंनि मानब गेदेर सासे प्रफेसर ओंखायनो आङो लासै लासै सालायनानैहाय मेडामखौहाय 40-30नि बांसिन स्पिडआवहाय आं सालायाखै गारिखौ बेबायदि लानानैहाय आङो थांदोंमोन जेब्ला फ्रेंकफर्टआव थांदों मेडामा आंखौ लांफैदों मेडामा सासे सेनियर प्रफेसर मेडामा अब्लाबो गावनो लांफैबाय लानानै जेब्ला एयारपर्टनिफ्राय फ्रेंकफर्ट इउनिभार्सिटि अफ एप्लाइड साइन्सेससिम सालायनानै थांदों आंखौहाय बेसेबां सालायदों दे मेडामा बुंनो हागोन नामा नोंसोरो सोर बेसेबां सालायो बेवहायलाय बिराद गोख्रै गोख्रै सालायग्रा दङ 140नि गोजौआव सालायदों मेडामा गारिखौ हागोन I shared with the audience about my experience of visiting Frankfurt and how I was very slow driver here in Assam and how fast you drove there between the airport and the university and they are amazed. आरो दिनैहाय बेयाव नोंथांमोना जे ज' जाफैनो हादों बेबो जोंनि थाखाय जोबोद मोनसे गोजोनथाव मोनसे खाबुखौ जोङो लानो हागोनखौ आङो फोथायदों मानो होनोब्ला बे गासैबो प्रग्रामखौ खुंनो थाखाय जोङो से दानल' मोनदों से आधा दान मोनदों 1.5 month मोनदों बे से आधा दानावहाय बेसेबांबा गाजा गोमजायै नोंथांमोनाबो फैबाय जोंनि आलासि बिथांमोनाबो माब्लाबाबो जोंखौ नेवसियालासिनो जेब्लानो लिंदों अब्लानो थांगोन औ बड'लेण्डआव थांगोन क'क्राझाराव थांनानै जोङो नायहैथारगोन औ फंसेब्लाबो जोङो सोलोंनानैसो फैगोन बुंनोथ' फैनो होनाखै मेडामा होनदों फंसेब्लाबो आङो सोलोंनो मोनगोन नोंसोरनि जायगायाव थांनानै बेखौ बुंनानै मेडामा फैदोंमोन दा बिनि थाखायनो जोबोद गोजोननाय थादों मेडामनि जा आइडियाफोर दङ बेखौहाय आङो बुंनानै होनोसै आरो दिनैहाय मोनसे बाथ्राखौ आङो बुंबावनांगोन जे जोंनि गेजेराव बेयाव गोजौआव जौसाङाव जिरायनानै थानाय साफ्रोमबो बिथांमोना गुबुन गुबुन फसंथानफोरावहाय उन्दै गथ'फोरनि मोनथायफोरनि सायाव गावसोरनि जेसेबां दङ बेखौ होजोबनानै बिसोरो दिनैहाय नैबे मोनसे लेभेलसिम सफैनाय साफ्रोमबो मेडाममोन आरो सार बिसोरखौहाय जोङो मोननो हानायाबो जोंनि थाखाय जोबोद खाफाल गोनां आरो गोग्गाथावबो होननानै आं सानो अब्लाबो दा मेडामनि नैबे प्रेजेन्टेसनाव बेखौनो बुंदों जे उन्दै गथ'फोरनि मोनथाया जेरावबो इन्डियायावबो मोनथाया दङ गोख्रों मोजां मोनथायफोरा दंजोबो बेबायदिनो जार्मानियावबो मोनथायफोरा दंजोबो नाथाय उन्दै गथ'फोरखौ नेवसिनाय उन्दै गथ'फोरखौहाय गाज्रि रोखोमै साजा होनाय बिसोरखौ नेवसिनाय बेफोरो जेरावबो जायो जेरै इन्डियायाव जादों बेबायदिनो जार्मानियावबो जादों होननानैहाय मेडामा बुंदों 152 उन्दै गथ'फोरा बिसोरनिया बेबायदिनो भायलेन्स गिख्रंथावै साजा बा बेफोरबायदि उदखार खामानि मावनानैहाय बिसोरो थैनांदों होननानै बुंदों बेवहाय आरो 115 बिसोरो बेनि गेजेराव 6 बोसोरनिबो उन्दैसिन गथ'फोरमोन दा बियो मा फोरमायो जोंनि भारत हादोरा दासो डेभेलपिं कान्ट्रि जार्मानि बायदि हादोरा बुहुमनि टप कान्ट्रिफोरनि गेजेराव दङ बिसोरनि धोन बिसोरनि गासैबो गभर्नमेन्टनि सिस्टेम बिसोरनि गासैबो मेकानिजम बेफोरो पइन्टआव एक्युरेसि जानानै थायो बिसोरनि गारि सफैनाया 6 रिंगा
30 मिनिट 40 सेकेन्ड बे समाव सफैगोन गारिया 40 सेकेन्डसिम बिसोरना एक्युरेसि थाहैयो गारि मोनसे खारनाया दा बेफोरबायदिखौ नायोब्ला बेफोरबायदि सिस्टेम थानानैबो जार्मानि बायदियावहायबो उन्दै गथ'फोरखौ नासयनाया दिनै दङ उन्दै गथ'फोरखौहाय नेवसिनायाबो दिनै दङ आरो उन्दै गथ'फोरखौ बे उदखार खालामनानै बेबायदि खैफोदाव खोख्लैनायाबो दिनै बेरखांदों होननानै बेयाव बुंदों दा बेबायदिनो फ्रेंकफर्ट इउनिभार्सिटिनि एप्लाइड साइन्सेस बिसोरो मुलुगसोलोंसालि हिसाबै बेखौ मोनसे एनालाइसिस खालामबाय सिस्टेमा दङ पुलिसाबो दं फोरोंगिरियाबो दं बिमा बिफायाबो दङ गासैबो सरकारनि जाखिनि होनांगौ बेफोरखौबो होजोबनानै दङ नाथाय बिनि गेजेरावहाय माखासे इनफरमेशन गेप जानानै थादों मोनथिलायनाया खाना जानानै थादों गावजों गाव ज' मावलायनाया बियो नांगौ बायदि जायाखै दा बेखौ लानानै दिनै बेबायदि मोनसे एनालाइसिस खालामनानै बिसोरो मोनदों होननानै बेवहाय फोरमायदों आरो बेखौ लानानैनो दिनै मोनसे इन्टारडिसिप्लिनारि होनदों जोंनि मुलुगसोलोंसालिफोरावहाय गुबुन गुबुन जा प्रग्रामफोर दङ फरायनायनि थाखाय पलिटिकेल साइन्स फरायबाय जेनेबा पलिटिकेल साइन्सनि स्टुडेन्टआ चाइल्ड राइट्स फरायदों नामा दिनै सोरबा दङ ना पलिटिकेल साइन्सनि स्टुडेन्ट आखाइ थिखांनो हागोन नामा मा साबजेक्ट फरायदों जोंनि फरायसा नोंथांमोना मैथमेटिक्स फरायनानै दिनै उन्दै गथ'फोरनि मोनथायनि बिसय नोंथाङा फरायनो मोनदों नामा मोनाखै आरो मा साबजेक्ट फरायबावदों सोरबा बुंहरनो हागोन ना गुबुन साबजेक्टनि गैया नामा स' बेफोरबायदि जाहोनाव दिनै बायदि जोंनि गेजेराव सोमोन्दो गैलायि जानायलाय बिसयनि बेलायाव बेखौ जोंनि कारिकुलामाव सोफायैलाय बेफोरबायदि जानायखौहाय जोङो नुनो मोनदों दा बिनि थाखायनो उन्दै गथ'फोरनि थाखाय मुलुगसोलोंसालिफ्रा जुदि माबाफोर प्रग्राम कन्डाक्ट खालामनांगौब्ला बेखौहाय इन्टारडिसिप्लिनारि खालामनांगोन साफ्रोमबो मोनफ्रोमबो मेथामेटिक्सखौबो नांगोन जानो हागौ दिनै उन्दै गथ'फोरनि बिसयखौहाय सावरायनो थाखाय जोंनो कम्पिउटार साइन्सखौबो नांगोन जानो हागौ उन्दै गथ'फोरनि बिसयखौ सावरायनो थाखाय इक'नमिक्स जोंनो नांगोन पलिटिकेल साइन्स डेफिनेटलि बियो मोनसे इम्पर्टेन्ट साबजेक्ट दा सासे उन्दै गथ'फोरनि थाखाय मावनो जुदि गोसो जानाय मानसिया फरायनो गोसोब्ला बियो नैबे गासैबो साबजेक्टफोरखौहाय मोनसे नलेज थानांगोन बिहा बेखौ बिथा खालामनानै बिथांमोना बे कर्सखौहाय खालामदों दा गुबुन गुबुन हादोराव गुबुन गुबुन कन्टेक्स्ट गुबुन गुबुन समाज गुबुन गुबुन नियम निति आरो गुबुन गुबुन जारिमिन जाथायफोर जानानै थांदों दा बिनि बेलायाव मोनसे कर्स होनोब्ला फोरोंनायनि मोनसे कर्स प्रग्राम खालामनोब्ला बेखौहाय बे कन्टेक्सखौहाय लाफानानैसो आवगायनांगोन होननानैहायबो बेवहाय फोरमायदों दा बेबायदिनो बे गासैबो एक्सपिरियेन्सफोरखौ लानानै फ्रेंकफर्ट इउनिभार्सिटि अफ एप्लाइड साइन्सेस ओमफ्राय आसाम डन बस्क' इउनिभार्सिटि बिसोरो जयैनो लोगो नांनानै मोनसे प्रग्रामखौहाय स्टार्ट खालामदोंमोन आरो बेनो जाहैबाय चाइल्ड प्रोटेक्शननि सोमोन्दै उन्दै गथ'फोरखौ रैखाथि होनायनि सायावहाय बे कर्सखौ खालामदोंमोन दा बिनि माखासे थांखिफोरानो जादों
familiarization with different institutional and disciplinary perspectives on the case and cooperation with other stakeholders in child protection, insight into legal mandates, self-image, ways of acting and methods of the professions involved in child protection. गिबियावहायनो होनदों गासैबो फसंथानफोर जायहा इम्पर्टेन्ट बिथिंफोरावहाय उन्दै गथ'फोरनि रैखाथिनि सायाव मावनानै दङ बेखौ मोनथिनांगोन। साप'ज दिनै सासे गथ'आ हाबा जादों गामियाव, আজি আমি ধৰি লওক এটা শিশু বিয়া হৈছে আমাৰ গাঁৱত, সাপ'জ ইন এ ভিলেজ ইন চিৰাং, ক'ত যাম? गामिनि मानसिफ्रा मा खालामो, माहाय थांगोन माहाय मागोन रावबो मोनथिया, सोरबा खुंग्राखौबो रायगोन गामिनि मानसिफ्रा बुथायो। दा बेफोरबायदि जाहोनावहाय गासैबो अनुष्ठानफोर फसंथानफोर आरो मानसिफोर जायहा बे चाइल्ड प्रटेक्शननि गुबुन गुबुन लेभेलाव मावो बेनि सिस्टेमखौहायबो मोनथिनांगोन आरो जा अनुष्ठानफोर दङ बेखौबो मोनथिनांगोन, मानसिफोरखौबो मोनथिनांगोन, पार्सनेलखौबो मोनथिनांगोन आरो इन्स्टिटिउसनफोरखौबो मोनथिनांगोन। बेनि सायावहाय जुदि जोंहा थोजासे नलेज थाब्लासो उन्दै गथ'नि थाखाय जोङो मावनो हागोनखौ बेयाव फोरमायदों आरो बियो सोलोंथायावनो सोफानांगौ होननानै। दा बेबायदिनो बे कर्सआ कम्पालसारि साफ्रोमनिबो थाखाय आरो गुबुन गुबुन मेथड बाहायगोन बेखौ फोरोंनायनि थाखाय। दा बेवहाय जेरै मोनसे स्ट्राक्चार खालामनानै होदों। दा कर्स सासे उन्दै गथ' मिया होननायनि केसखौ लानानै बे कर्सखौ डेभेलप खालामनानै जादों। बे उन्दै गथ'आ न'खराव बिफानिफ्राय जेब्लायबो बियो साजाखौ मोनबाय थादोंमोन, साजा होजाबाय थादोंमोन, नासयजादोंमोन। दा बिनि बिमाया न'खरखौ गारनानै खारबाय, ओमफ्राय बियो ड्राग्स जाग्रा जाहैबाय, फेग्रा मुवा जाग्रा जाहैबाय आरो बिनि थानायनि जायगायाबो बेखौबो मोनथिया दाना बबेहा थायो, ओरैनो हमलेस बायदि सासे जानानै थाबाय। दा बिनि बेलायावनो बेखौहाय फोरमाय। दा बिनि बेलायावहाय गिबियावनो मोनसे नटिफिकेसनखौ होग्रोनांगोन होनदों, एसेसमेन्ट अफ एन्डेन्जारमेन्ट, बिहा मा मा बेलायाव बियो बेखौ बासायनांगौ, बेखौ रैखाथि होनांगौ, मा मा बेलायाव बेखौ नायबिजिरनांगोन। पुलिस बिफानाबो बेखौ मोनसे नायबिजिरनांगोन। बेनि उनाव जोंनि जा सावस्रि देहा सावस्रि नि मावगिरिफोर डक्टरफोर बिथांमोनाबो बेखौ नायबिजिरनांगोन। बिनि उनावहाय जिहेतु बे उन्दै गथ'आ मोनसे आलाय सिलाय अबस्थायाव दङ, बिगोमा गैया बा न' गैया, बेखौ बबेहा दोनथ'नो, बबे जायगायाव बेखौ दोनथ'नो साननै सानथामनि थाखायब्लाबो बेफोरबायदिनि मोनसे सुबिदा आरो something is sorry about this. बिमा बिफाखौहाय मा नोजोरजों जोङो बिसोरखौ बेरखांहोगोन आरो उन्दै गथ'फोरनि सायाव बिमा बिफाहा बेसेबांसिम अधिकार दङ। आंनि गथ'नालाय आं बुनो मोनगौ, आंनि गथ'नालाय आं सोबादों, आंनि गथ'नालाय आं हाबा होगोन। दा जोंनि समाजाव नैबेबायदि साननायानो सोलियो। नाथाय उन्दै गथ'फोरनि जानाखि मोनथायफोर बेखौ जेरै मिगुएल सारा दहाय एसे बुंलांबाय, बियो इउनिभार्सेल, भारतआवनो हक गुबुन हादोरावबो हक उन्दै गथ'फोरनि मोनथाया जेरावबो समान। बिमा बिफाहाबो बेखौ बुनो, बेखौ नेवसिनो आरो बेखौ नासयनो दिनैनि दिनाव अधिकार गैलिया। दा नैबे बाथ्राखौनो लानानै न'खरहा उन्दै गथ'नि सायावहाय मा रोखोमनि बेबस्था लानांगौ बेखौ फोरमायनायनि थाखाय, नायबिजिरनायनि थाखाय आरो जुदि न'खरनि अनगायैबो
गुबुन न'खरा बे गथ'खौ खांनायनि बेबस्था दङ नामा दा गोबां समाव जोङो खांनो लांनायखौ नुदों नाथाय खांनो लांनानैबो बेबायदि आलाय सिलाय जानाय गथ'फोरखौ बखालि लानोसो लांनायखौबो जोङो नुनो मोनो जोंनि समाजावहाय in our context especially in the context of foster care and also adoption by relatives it is found that there are several cases whereby the child is taken not for her betterment, but to be treated as a domestic help in the families. So even in the case of foster care, नैबेयावहाय मेडामा मोनसे भिडिअ खालामदोंमोन मेडामा मोनसे भिडिअ होदोंमोन बेवहाय बेबायदि सिचुएसनाव गोग्लैनाय गथ'फोरनि थाखाय स्टेप 1 फार्स्टआवहाय मा खालामनांगौ स्टेप 2 बेयावहाय आरो मा खालामनांगौ स्टेप 3 अब्ला मा खालामहैनांगौ आरो बेखौहाय बुजिनो थाखाय सोलोंथाइ लानाय उन्दै गथ'फोरनि रैखाथिनि थाखाय मावनो जाय मानसिया सोलोंथाइ लादों बे फरायसाया मा बिसयखौहाय स्टेप बाय स्टेप लानानै बेखौ आवगायलांनांगौ बेखौहायनो फोरमायदोंमोन मेडामा दा बेवहायनो बेखौहाय फोरमायदों I have explained the process in the early उनावहाय बे साननै सानथाम दोनथ'नायनि उनावहाय बेनि थाखाय बेसेबां गोलाव सम बियो 19 बोसोर बैसोसिम जिहेतु जोंना उन्दै गथ'फोरखौहाय बे रुलनि सायावहाय मोनथायफ्रा दङ बेखौहायनो बेवहाय फोरमायदों जोबनायाव बेखौनो बुंबाय जे गासैबो गुबुन गुबुन फसंथानफोरा गासैबो खौसेयै बेखौ मावनो हानांगोन आरो बेखौनो लानानै जोंनि फरायसाफ्राबो वेलफेयार कमिटिया मा बेखौ बुजिनांगोन NGOsफ्रा मा मावदों बेखौहायबो लानांगोन आरो जाय मानसिफ्रा केयार होयो उन्दै गथ'नो जेनेबा हस्टेलफ्रावहायनो होन बा बे चिल्ड्रेन्स हमफोरावहायनो होन बेफोरावहाय स्कुलफोरावहाय डक्टर्स आरो पुलिसफोर स' बेखौ लानानैनो मोनसे भिजन मोनसे थांखि जे फ्रेंकफर्ट इउनिभार्सिटि अफ एप्लाइड साइन्सेस आरो आसाम डन बस्क' इउनिभार्सिटिया मोननैजों माब्रै ज' जानानै मोनसे मोजां बे जोंनि इउनिभार्सिटिफोर बायदियाव बडलेण्ड इउनिभार्सिटि बा गुबुन गुबुन इउनिभार्सिटिफोर बायदियावहाय बेखौहाय अफार खालामनो हागोन उननि समनिफ्राव आरो बेखौनो बुंनानै फोजोबबाय I once again thank you ma'am and also बयखौबो मोजाङै गोसो होनानै खोनासंनायनि थाखाय हामबायसै thank you sir. Thank you so much, dear Victor. So you have explained it so well that even if without video also to imagine what are the steps that it's required when you are talking about case management, when you are talking about how to handle a child who is in difficult circumstances or experience violence in different forms at a different level. So I'm happy to note that both the universities have come together and partner and then now thinking to launch this course. I'm sure the other university will take benefit from this module. And also, what I would request, Professor Ursula, just look at the Indian legal framework and then customize it, because in our Juvenile Justice Care and Protection Act, there are certain steps which is very elaborate, which is clearly mentioned as far as process is concerned, SOP is concerned. So just look at that and then change little bit of terminology, what is written there.
So that will perfectly fit to the Indian context, and also look at different law university. They offer course on PG diploma on child rights. I see a great potential where we can, incorporate this particular module. So great work. Yeah. Thank you once again. And this gives us an opportunity to learn about the role of academic institution and how it plays an important role in creating the workforce. Because all of you today present here as a student, tomorrow you move out from the institution and then join in different, profession. I'm sure the input that what you are getting it in different forms, whether it is a knowledge festival or as a elective course or as in your respective discipline. I am happy to learn that mathematics students are leading this discussion. So this is such a this is really truly called interdisciplinary subject when it comes to child rights. It's there is no boundary actually. Each discipline they have ample opportunity to contribute in order to realize the rights of children. With this summarization, may I now invite our last but not the least speaker, Miss Bhautin, please pardon me, for my pronunciation, Mushahari, who is the managing trustee of Action for Inclusion and Empowerment Trust. And from the very beginning, she's telling me that you invite me in the last. So now it is your time, ma'am. And yes, so you have 20 minutes, 30 minutes, it's up to you. So, respected dignitaries on the stage and guests present here. My topic will be a little different than our guest. So, I would like to ask whether in English or Bodo, because SMS is I'm really poor. So, which one you want? মই কৈছোঁ যে মোৰ SMS ইমান ভাল নহয় তো ইংলিছ আৰু বড়ো ক'ব পাৰিম তো কোনটো ক'লে বেছি ভাল হ'ব বড়ো না ইংলিছ so I think I will mix up into mixed language ক'লে থাকি যায় but I will try my best. So here sir and madam has mentioned about so many rights and provisions about children with disability. I would like to share about our organization a little bit. So I have come from Action for Inclusion and Empowerment Trust. We work with women and children with disability here in Kokrajhar. Since we only started working from 2015, initially we started working with a woman with disability, and then further we thought that if disability people need to know, then we need to start from education, children. Zelana Kizang start Kalamdaman Action for Inclusion and Empowerment Trust, AIT ko. Disability, Nandung disability ko zeng masana, zeng bengura benguri hana, handicap hana zeng matsra, dekho hana. The women हिन्जाव माहारिजों जों खामानि मावदों आरो हिन्जाव ओमफ्राय उन्दै गथ' माहारिजों बेनि उनावहाय जों जेब्ला स्टार्ट खालामदोंमोन जों हिन्जाव माहारिफोरजों खामानि मावदोंमोन बेनि उनावहाय जों सानबाय डिसेबिलिटिखौ बहुद खम मानसियानो बुजियो नासयो मालाबाबो इनक्लुड खालामा थ' बेनि थाखायनो जों सानबाय कि एजुकेसनानो मोनसे बेस्ट पलिसि जागोन जेला रिच आउट जानो हागोन बुजिगोन उन्दैनिफ्रायनो जेला मोनबाय थायो होमबा बुजिलाङो बेनि सासे जे नोंजों दंफायो बेनि नांगौ बेहा मा गोनांथि दं बा मा गैया बेखौ साननानै जों दावबायलांदों ओमफ्राय जोङो चिल्ड्रेन विथ डिसेबिलिटिजों खामानि मावदों आं एसे ब्रिफलि मोनसे UNCRPD होननानै बुङो बेखौ आं बुंनो सानदों UNCRPD आ जाहैबाय United Nations Convention on the Rights for Persons with Disability. It aims to enhance opportunity for people with disability to participate in all aspects of social and political life, including access to employment, education, healthcare, information, justice, public transportation, and built environment. So, I'm
बेहाय बुंदों दि बे UNCRPD आव बुंदों people with disability का political life आरो employment education health information justice public नि मोनथाय दं होनना दिनै दा बे जोंनि जुथुम्मायावहाय सोरबा सासे मानसि दं नामा people with disability नुनो मोनदों नामा people with disability बा children with disability नुनो मोनदों नामा सोरबाफोर मानि थाखाय बे होमबा जेरावहाय राइट्स दङ जेरावहाय एक्ट दङ होमबा मानि थाखाय गैया त' बे मोनसे साननो गोनां खोथा बिसनाबो लाइफ दं डिगनिटि दं मोनसे होमबा मानो पार्टिसिपेट खालामनो हाया इनक्लुजन होननाय फैया बेजों लोगोसे आं मोनसे आरो नैबे चिल्ड्रेन राइट्सनि फैनो सानदों बेहाय UNCRC जेराव सार मेडाममोनहा बुंबाय थादों UNCRC चाइल्ड राइट्सनि फारसे बेहाय मोनब्रै प्रिन्सिपल्स दं बेहाय बुंदों राइट टु सार्भाइभल प्रटेक्शन पार्टिसिपेशन डेभलपमेन्ट पार्टिसिपेन्ट्सखौ दिनै नुवाखै जोङो ससियेलफ्राव नुनो थाङा आरो बेनि सायावहाय डेभलपमेन्टआवबो नुवाखै इनफ्रास्ट्राक्चारानो गैया रेम्प गैया स्कुलफ्राव रेम्प दंबाबो बेहाय हुइलचेयार सोरबा लांग्रा दंबा नारनो हानाय नङा नंगौना नङा स्कुलफ्राव दरजायाव प्लेन थानांगौ बेयो गोजौ जानानै थायो टयलेट्सफ्राव थां दिनैहाय बैहाय नुदों आं जेन्डार निउट्रेल टयलेट होननानै जों मानो होनो हायाखि डिसेबल फ्रेन्डलि स्कुल बा डिसेबल फ्रेन्डलि टयलेट बेखौ आं बुंनो सानो जेराव बिसनाव मोनथाय दङ राइट्स दङ होमबा जों मानो बेखौ आवगायनानै जों ज' फैनानै बे राइट्स बे अधिकारखौ जों होनो हाया दा सार मेडाममोनहा बेसेबांखि अधिकार राइट्स प्रभिजननि फारसे होनदों बे सासे डिसेबल गथ'आबो मोनथाय दङ बेनि उनावहाय मोनसे फैबावो जोंना इण्डियानाव मोनसे एक्ट दं RPW एक्ट बे जाहैबाय 2016 आव फैदों बेनि सिगां 1995 आव मोनसे एक्ट दंमोन PWD होननाय दं ओमफ्राय बेनि उनावहाय बेखौ नायै बिजिरै नङा राइट टु पर्सन फर डिसेबिलिटि होननानै फैबाय RPW एक्ट बेनि आन्दारावबो बुङो कि So, okay, I'll explain it this. I was saying, I think everyone is aware about UNCRPD and then UNCRC, where Sir Madam has been mentioning. So after that, I would like to come, like, we have an Indian Act where it says RPW Act, Rights of Person with Disability. Under that, it says, people with disability enjoy the right to equality, life with dignity and respect for his or her own integrity equally with others. जेरै मानसिफ्रा गावनि सन्मान गावनि मोनथाय बेखौ आलदा जेरैहाय मानसिफ्रा मोनदों बिदिनो एखे मोननांगौ होननानै फैदों दा आङो बे टेक्निकेल टार्म्सआव थांला जोंनि मोनसे एक्सपिरियेन्सखौ आं शेयार खालामनि जों मा फेस जादों जोंनि फिल्डआवहाय जेब्लानाखि जों स्टार्ट खालामदों मावनो आं मोनसे घटना जादोंमोन जोङो जोंनि जायगा जेरावहाय जों इन्टारभेनसन खामानि मावो बाव जोंना मोनसे एसोसिएशन दं वुमेन विथ डिसेबिलिटि एसोसिएशन बिसोरखौ जों जेब्ला स्कुल एडप्ट खालामदोंमोन गभर्नमेन्ट स्कुल मोननै एडप्ट खालामदों जोङो इनक्लुसिभ एजुकेशन माबा प्रेक्टिस खालामनो होननानै बेहाय मा जादों जेब्लानाखि जों जोंनि बे वुमेनखौ लांदों फार्स्ट टाइम इन्टारेक्ट खालामनो थाखाय स्टुडेन्टफोरजों गथ'फ्रा नायनानै मिनिबाय आसि थुयै थुयै मिनिदों नै फैबाय हनै माबा सासे थाबायनो हाया बिखुङावसो लानानै फैयो सासे ओरैबायदि दङ बेफोरबायदि होननानै गथ'फ्रा मिनिबाय आरो थ' बेखायनो मिथियो बेसेबां उन्दैफ्रा मोनसे किउरियासबो थायो आरो बे टाइमाव जेब्लानाखि नों खोन्थायो जेब्लानाखि नों उन्दैफोरनो जेब्ला लांफायो पियर लार्निं जेखौ होनो जोङो होमबा बे जेब्ला गोग्लैगोन बेजों लोगोसे थाबा बे गोग्लैगोन होनबा बै सासे थिखोगोन बा बेनि खाथियाव सोरबा लिरनो हायाखैबा बे लोगोआ बेखौ खोन्थागोन कि बेनो उमुक नांगौ थ' बेबायदिनो जों सानदोंमोन इनक्लुसिभ एजुकेसना जों बेफोरबायदि लांगोन होननानै थ' बेफोर एवेयारनेस गैयिनि थाखाय आरो पेरेन्टसफ्राबो बेनि उनावहाय जों जेब्ला एडप्ट खालामो इनक्लुसिभ एजुकेसननि थाखाय एडप्ट खालामनायाव मोनसे स्कुलावहाय ओरैबायदि जादों
children with disability गथ'खौ bully खालामो बेहा curious थायो एसे लोगो जानो थाखाय मालाबा express खालामनो हाया नालाय बिसोरो गावसिनि expression जों खोन्थायो बा नोंखौ एसे बुनाय बायदि खालामनो हागौ बा एसे जे regular गथ'फ्रा आं regular use खालामो आं normal use खालामा nobody is normal here and I don't know what is normal I never heard this word normal everyone have any each and one have any kind of disability but we might not know so सोरबा लेसबो खानो हाया जानो हागौ सोरबा माबाफोर मोनसेबो खालामनो हाया जानो हागौ बे डिसेबिलिटी साननायनि सायावसो बेनि उनावहाय आं रेगुलार स्टुडेन्ट मानो थाखाय होनो रेगुलार स्कुलाव थांनाय आरोखि स्टुडेन्टफोर बेहाय मा जादों पेरेन्टसआ कमप्लेन फैबाय बे गथ'आ आंनि फिसाखौ बुयो आंनि फिसानि स्कार्टखौ फुल खालामो आंनि फिसानि माबा पेन्सिलखौ सिख'यो होननानै तो बेहाय जेलानाखि कमप्लेन फैयो टिचाराबो होनबाय जों बे गथ'खौ दोननो हाला बे स्कुलावहाय बिदि कमप्लेन फैबाय होननानै तो बेहाय जों बिराद सिन्था खालामबाय मा खालामजानांगौ मा मानांगौ ओरैनोबाबो जोङो गथ'फोरखौ एडमिसन मोनखाया लाखाया फरायनो रोङा होननानै बेहाय जों प्रिन्सिपालजों रायलायनानै पेरेन्ट्सजों रायलायनानै जोङो काउन्सिलिं खालामबाय पेरेन्ट्सफोरखौ So what we have done, we have adopted 2 schools for practicing inclusive education. So what we have seen, that one child is there who the civil child, they want more attention because some of them it doesn't have speech, so they give more expressions to get attention. So parents were complain होनानै बेनि उनावहाय जों बिसोरजों माबा मा होनो रायलायनानै डिसकास खालामनानै जोङो बहुत मोबिलाइज खालामनांदों जोङो बहुत रायलायनानैसो मोनसे माबायाव फैबाय कि पेरेन्ट्सफ्रा बुजिबाय जेलानाखि बै स्टुडेन्टखौ जिरायहोनानै नाय बेनि मा डिमान्ड बे बुस्थुखौ साननानै नायनानै नायबिजिरो बेनि उनावहाय बेनो जुदि एटेनसन होबानो बियो दलद थागोन होननानै तो बेबायदि जों बिराद काउन्सिलिं खालामनांदों पेरेन्ट्सफोरजों ओमफ्राय जोङो जेलानाखि चिल्ड्रेन होननानै बुङो and when we say about children somewhere we subside children with disability so I know there are many rights provision everybody know that rights and provision we all talk about rights and provision and then children's right and all but somewhere we forgot to mention disability children with disability and their needs are a little different than others so and also when we call inclusion we doesn't pick up disability issues so we worked with different NGOs here. We collaborate with one of our partner, Nelson NGO. So we try to train their teacher so that they include their students in their schools. जेलानाखि जों टिचारफोरखौ 20टा टिचारफोरखौ ट्रेन खालामो low cost material नि सायाव low cost TLM teaching learning material बेहाय टिचार्सफोरनि मोनसे कमप्लेन थायोमोन आरो बिसोर बिराद रिलाक्टेन्ट जायोमोन फैनो नागिरा मानो नांगौ जोंनो जों बिसोरखौ फोरोंनोनो हानाय नङा बेफोरबायदि खोथा होनोमोन आरो बेहाय नोंगौ खस्थ' जायो टिचार्सफोरनि थाखाय मानोना सासे गथ'खौ सासे डिसेबल गथ'खौ एसे एटेनसन बांसिन होनांगौ जानानै फैयो जे रेगुलार गथ'निफ्राय तो बेहाय टिचारनि जेलानाखि टिचारा बेनो मोर एटेनसन होयोबा दस्रा स्टुडेन्टफ्रा थालाङो दा जों बेखौसो नायनो ना दस्रा स्टुडेन्टफोरखौसो नायनो होननानै बे टिचारनि मोनसे कमप्लेनमोन आरोखि ओमफ्राय बेहाय गभर्नमेन्टआबो मोनसे ओरैबायदि
मोनसे बिसिनाबो रेशिअ दङ 30:1 बाट जोंना बहुत गभर्नमेन्ट स्कुलाव बहुत खम स्टुडेन्टफोरा एडमिसन जायो जायनि थाखाय बिसोरो गासिबो क्लास 1 निफ्राय 5 सिमसो नायनांगौ जानानै फैयो गासिबो स्टुडेन्टसखौ थ' बेहाय दा सासे स्टुडेन्टनि थाखाय बे पुरा होल क्लासखौनो साबसाइड खालामनाय जायो थ' बेनि थाखाय बिसिना बे मोनसे कमप्लेनमोन बहुत NGOsफोर फैदों खामानि मावनो लुबैयो खिन्थु जोंनि गभर्नमेन्टनाव मोनसे मेकानिजम गैया बे दा बे एटलिस्ट बे लेभेलावहाय बे डिसेबिलिटिखौ मारै इनक्लुड खालामनो मारै खालामबा मोजां जागोन दा जों फिसा फिसा चेन्जेस इनफ्रास्ट्राक्चार चेन्जेसनि खोथा होननानै बुंदों बा स्कुलावहाय रेम्प होनाय कलेजफ्राव रेम्प होनाय इनस्टिटिउसनफ्राव बिल्डिंफ्राव नोङो लिफ्ट होनाय बेफोरबायदि फिसा फिसा चेन्जेस खालामबानो मोनसे इनक्लुजनबो जागोन आरो बेजों लोगोसे जोंना दा बहुत स्टुडेन्टस दङ जों थाङो बहुत डिसेबिलिटि दङ दिनैहाय आं नुदों आंगनबादि वर्कार्स दिनै आशा वर्कार्सबो दं जोंनि गेजेरावहाय दा आं सोंनो सानो मेडाम मोननावहाय नोंसोरथ' ग्राउन्ड लेभेलाव खामानि मावो नंगौना नङा दा बेहाय नोंसोर बिराद उन्दैफोर लोगो मोनो ओमफ्राय बेनि उनावहाय जेला डिसेबल स्टुडेन्टस डिसेबल चिल्ड्रेन्स लोगो मोनो चिल्ड्रेन विथ डिसेबिलिटि लोगो मोनो होमबा नोंसोर मारै डिल खालामो जोंनाव बे एवेयारनेस होननाय गैया जोंखौ जेराव इनस्टिटिउसन जे ट्रेनिं होयो बेहाय जोंखौ फोरोङाखै दिनै कि डिसेबल चिल्ड्रेन्सफोरखौ मारै हेन्डेल खालामनो बिसोरखौ नुयोबा जों अबहाय लांनो बिसनि थाखाय मा रिसोर्सेस दं बेखौ फोरोंनाय जाया बे डाइड B.Ed कलेजफ्राव बेफोरबायदिखौ फोरोंनाय जाया नो इनक्लुजन टिचारफोरखौ मोनसे बेसिक डिसेबिलिटिनि सोमोन्दै खोन्थानांगौ होननानै बुजिनांगौ होननानै बेखौ मेनसन खालामनाय जाया बेनि थाखायनो टिचार्सफ्राबो होननानै बुङो टिचार्सफोरनिबो दाय होनाखै बेहाय बाट मारै इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ मा जागोन दा जोंनि खाथियाव सोरबा सासे डिसेबल गथ' फैयोबा जों बेखौ मारै हेन्डेल खालामनो बेफोरबायदिखौ बुंनाय जाया दिनैहाय बाल बिबाह होननानै बुंदों बाल्य बिबाह बाल्य बिबाह होननानै होनबाय थागासिनो दङ नंगौ नङा बेबो मोनसे रिजन डिसेबिलिटि चाइल्ड जानायनि थाखाय मैया दिगम्बर सारा मेडाल फाउन्डेसना बे मोजां मोनसे खोथा बुंलांदों दिनै दा 14 इयार्सआवनो नों जुदि हाबा जायोबा गावनो डेभेलप जागासिनो सिंजों बे मा चाइल्ड बियार खालामो अबभियासलि बेयो गावनि हेल्थआबो नस्थ' जागोन चाइल्डआबो सासे डिसेबिलिटि जन्म जागोन दा ओरैबायदि सिचुएसन जानानै फैबाय कि जों बहुत थाङो गामियावहाय डिसेबिलिटि होननानै बुंबा मिथियानो मा होननानै बुङो आथिं लेंग्रा नोंखौ बेबो मोनसे डिसेबिलिटि खिन्थु बहुत 21 टाइप्सनि डिसेबिलिटि दङ सोरबा सोरबा होनगोन ए जाम्बिसो बियो उन्दैनिफ्रायनो रायलाया बियो मेगनबो नाया खिन्थु बेबो मोनसे अटिज्म अटिस्टिक होननानै बुङो आरोखि अटिस्टिक चाइल्ड जों बेखौ बे गथ'खौ लोगो मोनोबा जों मारै हेन्डेल खालामगोन थ' बेनिबो मोनसे जेबो एवेयारनेस गैया जोंनाव बेनि उनावहाय आं बांद्राय गोलाव बुंला दिनैहाय जोंनि सायाव आं आदा भिक्टरखौ खोनाबाय थायो नाम आदा भिक्टरा एडुकेसनाव बिराद खामानि मावगासिनो दं होननानै आं बेखौनो रिकुवेस्ट खालामो आदाखौ कि डिसेबिलिटि इशुसखौ टेक आप खालाम जिहेतु जोंनि बिटिआरआव दा गभर्नमेन्ट स्टार्ट जादों आरो लोगोसे आङो जोंनि बेहाय बेसेबांखि नुजाफैनाय गासिबो गेस्टखौ आं रिकुवेस्ट खालामो कि children with disability बा people with disability नुयोबा दानासय हेफाजाब खालाम बयबो खोनाखाबाय खोमा स्टिफेन हकिन्स होननायखौ one of the greatest scientists बियो रायज्लायनोबो रोङा थाबायनोबो रोङा बियो मेसिनजोंसो खामानि मावोमोन
Mari scientist sana. Mari scientist sana apa? Of course, bisna infrastructure crabs ni ability alta. Jangan ni pai, jangan country ni pai. But bina opportunity kan, jangan opportunity gua. Jangan sanan kaya ki ini bimaran na. Sasi lai ini rengar dia, thabai ini rengar dia. Mari renggan belak. Mari selenggan. Ajan सब समय मुझे साना assume खालामो. जों सानगोर खायोसो माबा मोनसे बेखौ opportunity होनो नागारै कि बे थाबायगोन होनो नागारै जोङो बेखौ सानगोन थाखाय नंखाया बियो नंलालै बेखौ बिदि होननानै थायो चान्स हो मोनसे फ्रेन्डलि environment create खालाम आरो जेरावहाय बिसोरबो फैनो हानाय obviously नों दा नै जोंनावहाय दा जुदि सोरबा डिसेबल माबा दंबा आरो बा मारै फैनोमोन मारै फैगोन जोंना दा बे स्टेजआव गाखोनांगौबा रेम गैया बेखौ obviously सोरबा सासे बा हमफानांगोन बेजों independently बे फैनो हानाय नङा ओमफ्राय बहुत मानसियानो बेखौ मिनिगोन नायगोन जों बायदि साननानै लाया थ' बेहाय बिसिना मोनसे इनसिकिउर फैयो आरोखि रोंबाबो रोङाबाबो दा जोंनि वुमेनफोर मेरला दं जों वुमेनफोरजों खामानि मावो बिसोरो होनो जोंखौ नायो मिनियो बेनि थाखायनो जों थांनो बोरैबा उसुबिदा मोनो होननानै आरो आं लोगोसे आसा आंगनवाड़ी वर्कारफोरखौबो आङो रिक्वेस्ट खालामनो सानो जुदि बिदि इस्युफोर फैयोबा प्लिज टेक आप खालाम आरो आं मोनसेबो खोथा रिक्वेस्ट खालामनो सानो गभर्नमेन्टनि साइडजों बा एनि इन्स्टिटिउसनेल अर्गानाइजेसनफोरखौ आरोखि ना मा होनो जोंना आसा वर्कार्सफ्रानो आसा मेडाम वर्कार्सफ्रानो बिसोरनो जेनेबा ग्राउन्ड लेभेलाव खामानि मावदों हेल्थनि सायाव खामानि मावो दाख्लैसो जों मोनसे दतमायावहाय जों थांदोंमोन बेहाय जों मिटिं खुंहैदोंमोन थ' बेहाय दा सासे गथ'आ 2 बोसोर जाबाय दासिमबो थाबाया ओमफ्राय बेखौ मा होनदों malnutrition होनदों obviously बे malnutritionखौ नायनानै ओमफ्राय एसे मानसिया जाफुबाय दा बेहाय जों मा बे दा जोंनि गथ'फ्रा जोंनाव मोनसे माइलस्टोन थायोना दा जोंनि गथ'फ्रा 6 मासबा जिरायो 7-8 मासबा गसङो इन्डिपेन्डेन्टलि ओमफ्राय बेनि उनावहाय जेब्ला 10 मास 11 मास जायो एसे स्टेप फैयो आथिं गानाय बा नों बोसोरसे जाथारोबा हार्डलि बोसोरसे 2 मासाव थाबायहैखायो थ' बेखौ साना जोंना थाबायगोन होननानै बुङो ओमफ्राय बेनि उनावहाय बियो दा 2 बोसोर जालायलायबाय बियो दा हारसिं इन्डिपेन्डेन्टलि गसंनो हाया बेखौ नाया आरोखि माखासे माइलस्टोन्सफोरखौबो जुदि फोरोंनो हायोबा कि नैबे समावहाय गथ'फ्रा बिदि जानांगौ मानोना हेल्थ एक्सपार्ट होनो नायनांगौ थ' बे बुस्थुखौ जों थाल लाया बेखायनो जुदि सासे डिसेबल गथ'आ जन्म जायोबा बिसोरो सार्भिस मोनला आं होनाखि थिग जाथारो बे मोनसे कन्डिशनसो डिसेबिलिटिया बेमार नङा आरो मानसिफ्रा बेमार थिग जागोन होननानै बुङो खिन्थु बे मोनसे कन्डिशनसो जेराव जोंना आखाइ बायबाथाय बे आखाइ आगोलनि बायदि रोजोब जायाना एसे एनै मोनसे माबा थालांगोन थिग बिदिनो आं बारा गोबाव लाला सार मेडाममोनहा बुंजोबखाबाय आं जास्ट डिसेबिलिटिनि सायाव एसे एवेयारनेस जाहाथे मिन्थिदों बहुद खम एवेयारनेस दं जोंना बिथिंजाय बेजों लोगोसे बेजोंनो आं दिनैनि बिबुंथिखौ बावनो फोजोबनो सानबाय आं बुंला बयबो मेंजोब्बाय मानोना दहायनिफ्रायनो गसंनानै जिरायनानै दं सरि आरो खोनासंगासिनो दं बेनो एटेन्टिभलि स' बयनिसिमबो गोजोननाय थाबाय थेंक इउ स' माच Thank you so much, ma'am, for your sharing and your experience, particularly how you practice the inclusion in 2 schools and with the support of local NGO partners. You reach out to the people, those who are in need. So I mean, when we use this word disability, sometimes I find it very difficult to accept it, as a development practitioners. People with ability, because each one of us, he said rightly, each one of us, we have our own disability, which often we are not aware about it, but we are disabled in many ways. Like for example of language, all of us,
many of us sitting here, we are not familiar with the Boro language, but we are in one way also disabled, so because we do not have that exposure or in understanding the language in a particular context. So, having said that, if you look at the ways he explained it to international framework and one people disability act, Indian act, and also the inclusion, I sometimes find it that in the legal framework it is very clearly articulate that about the entitlements, provision, and the flagship program like Samagra Shiksha Abhiyan, which brings us this opportunity to create that platform and include it. But the reality, all of us we know that she explained it very nicely about how there is a gap between the policy and practices. This is where the role of civil society organization comes in to bring, to bridge that gap, generate evidence, and your experiment in this two school, I'm sure it will help the Bodoland region, all the districts, administration, and particularly the Samagra Shiksha Abhiyan team to learn from your experiment and include it as part of school inclusion policy. With this, now we finish all our guest speaker and they are sharing. We have another half an hour. I would request our audience who have been listening patiently for last almost 2.5 hours. Let's use this opportunity. If you have any questions in your mouth, in your mind, any doubt, any clarification, or anything you want to add, please be specific when you are going to share your question or reflection, and also mention to whom you are asking this question or seeking clarification. We have 5 speakers on the dais, so let's use for another 30 minutes for this session. Okay, are you ready now for this session or it's already tired? Anyone can start. Or if you don't have any question, then the speaker panel they will ask question to you, whatever you have left. Please be specific in your question. Babasag na mo nung basag niya hayek, so guess mo na. কারোবার যদি কিবা সুধিব লগা আছে আমাৰ চিফ গেষ্ট ষ্টেজত বহুত কথা সুধিব পাৰে Now, number number liawas and the program is স্যার Yes, জোয়ারখালী I was expecting this question from your end because yesterday you asked so many questions. স্যার Yes, sir. মই Yes, ma'am. জোয়ারখালী যিটো সুধিছে আপোনালোকে এইটোকে মেডাম বা ছাৰক জনাই দিলে ভাল হয় যিটো মই কুৱেশ্যন কৰিছিলো তাৰ এনসারটো যাতে আজি পাওঁ और एक बार क्वेश्चन पूछ लीजिए सर एंड मैडम ने মই বড়োদি কম কোনোবা ইন হিন্দি ইন ইংলিশ थारमाने जोङो चाइल्ड राइट्स दं होननानै बुंबाय थायो नाथाय एसे सिगां मेडामाबो बुंलांखाबाय डिसेबिलिटिया फेसिलिटि मोना येस मोनफ्रोमबो स्कुल हय प्राइभेट हय गभर्नमेन्ट हय एनि जेराव मानि बिल' 18 इयार्सफोर गथ' दङ नंगौ डिसेबिलिटिनि थाखाय जेबो आंबो फेसिलिटि नुनो मोनाखै एस ए गभर्नमेन्ट सार्भिस हल्डार हिसाबै बिनि थाखाय बे फेसिलिटिखौ आं नांगौ होननानै सानो लोगोसे एसे आङो पेरेन्ट्स होननानै बेखौनो आं मिथिनो लुगैदों जिहेतु बिल' 18 इयार्सनो जुदि चिल्ड्रेन राइट्स दङब्ला खालि गभर्नमेन्ट स्कुल बा प्राइभेट स्कुलजों एखे समान फेसिलिटि राइट्सखौ मोनदों मोनाखै बे राइट्सखौ जोंनो नांगौ एस ए पेरेन्ट्स एसे सार्भिस हल्डार हिसाबै आं मोननो लुबैयो 18 इयार्सनिखौ जिहेतु चाइल्ड मिनिट्स प्रटेक्ट खालामनोब्ला हय गभर्नमेन्टआनो जाथों हय प्राइभेटआनो जाथों समान नोजोरजों नायोब्लासो बे चाइल्ड मिनिट्सखौ जों फोजोबनो हागोन होननानै आं सानो बेखौ मेडामा हिन्दी एन्ड इंलिश No, thank you so much. आरो मोनसेबाव जों नुनो मोनो सिमेन्ट बा टाटा टिस्कुलफोरनि बेनारफोरखौ गिदिर नुयो
किन्तु मोनफ्रोमबो भिलेजाव मानो टल फ्रि हेल्पलाइनफोरखौ गिदिर गोलाराव नुनो मोना? So let me just introduce to ma'am. Ma'am is works with ICT's department and ICTS. Yes. So she has better understanding as far as her role is concerned. And yesterday she asked questions related to private school and facility in private school and government school. I think today's question, if someone can translate it, and we have speaker to answer. Translate it for everybody. The question that ma'am asked was about, she asked it as a parent as well as a government servant. She asked whether all the facilities related to children, especially children with disability, whether the facilities are available in private schools as well as government schools. If they are not available, why is there a bias between the private school and the government school? How should we encounter such problems that are existing? Disparities. हिंदी समझ में? हिंदी आता है ना? हाँ हाँ, तो हम हिंदी में बोलता है। इसीलिए असल में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। बेसिक जो प्राइवेट स्कूल है, बेसिक गवर्नमेंट स्कूल भी वैसे क्वालिटी का होना चाहिए। आइडियली, दिस इज आइडियल। इसलिए सिविल सोसाइटी को ये बार बार सरकार को रिमाइंड करना होगा कि वी वांट इक्वल राइट्स। एक बच्चा जो करोड़पति है वो अच्छा बाथरूम में जाएगा, और जो जिसके पास पैसा नहीं है वो गंदा एक बाथरूम में, टूटा फूटा बाथरूम में जाएगा। दिस इज अबाउट नेग्लेक्ट ऑफ चाइल्ड राइट्स। ओके, तो सिविल सोसाइटी को, गवर्नमेंट्स को, एनजीओज को, एसोसिएशंस को ये बार बार बोलना होगा। अभी कितने लोग बोलते हैं? बहुत कम, इसकी आवाज नहीं आता था। तो अगर बार बार रिप्रेजेंटेशन, मीडिया, हम लोग का, मेरा एक दोस्त भी है यहाँ मीडिया के, प्रांजल जी है, तो मीडिया को भी ये सब सवाल पूछते रहना होगा कि राइट्स अगर बोलते हैं इतना, हम आके आराम से भाषण देते हैं, जाके होटल में अच्छा डिनर करते हैं, पर असल में क्या हो रहा है? कमीशंस का भी रोल है ये देखने के लिए कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस का क्वालिटी इतना अच्छा, और अभी तो स्कूल, बहुत सारे स्कूल अच्छे हो गए। हम भी गए थे कुछ दिन पहले। पहले से 10 साल पहले से अगर आप अब देखेंगे, स्कूल के क्वालिटीज अच्छे हो जा रहे हैं। ये नहीं कि एकदम वैसा ही है। यहाँ भी आप लोग अगर कोकराझार के स्कूल देखेंगे, 10 साल पहले बहुत कंडीशन और बुरा हो था, राइट? अभी थोड़ा अच्छा हो गया, पर इसको यूनिवर्सल करना है। यूनिवर्सल करने के लिए आप, एक तो सिविल सोसाइटी का रोल है कि सरकार, हमारा स्टेट वेलफेयर स्टेट है, वेलफेयर स्टेट का दायित्व है कि सब बच्चे को सेफ फैसिलिटीज दे, बेसिक सेफ फैसिलिटीज। ऐसा एक प्राइवेट स्कूल में मार्बल का फ्लोरिंग है, दूसरे बच्चे को मार्बल का फ्लोरिंग की जरूरत नहीं है, पर अच्छा टिकाऊ फ्लोरिंग हो, अच्छा पानी का सप्लाई हो, पानी का टैप अगर वो कूलर का है, ये लोकल भी हो सकता है, पर अच्छा क्वालिटी का हो, तो वो सब बेसिक सर्विसेज अच्छा होना चाहिए। पर ये दायित्व है, और सिविल सोसाइटी से हम जो कर सकते हैं, कुछ स्कूल हम डिब्रूगढ़ में गए थे, जो गांव के स्कूल, वहां से बड़े बड़े लोग पढ़ के बड़े हुए हैं, तो वो क्या करते हैं, वो लोग सक्सेसफुल हो गए अभी, तो वो क्या करते हैं, अपने स्कूल में सपोर्ट करते हैं उस स्कूल को एनहांस करने के लिए। तो आप अगर जो सरकारी डिपार्टमेंट्स में अभी बने होंगे लाइफ में, तो आपका जो गांव का स्कूल है वहां आप भी हेल्प कर सकते हैं। तो कुछ कंट्रीब्यूट करके, आज के एलुमनी एसोसिएशंस भी होते हैं, तो वैसा करके भी आप सपोर्ट कर सकते हैं, काफी
पर जो यूनिवर्सली एक समान का सुविधा मिले इस शिक्षा মই আৰু অলপ এড কৰি দিম কথা কম অসমীয়াতে কম দে বুজি পাব বিলাই কম বিলাই কম এতিয়া যিটো কথা কৈছে তেখেতে যে আমাৰ সব চিভিল সোসাইটি অৰ্গানাইজেশ্যন সবৰে ৰোল এটা আছে আমাৰ সবৰে ৰোল আছে আমাৰ একচুয়ালি এটা সিস্টেম আছে এই সিস্টেমটো আমাৰ সৰকাৰি বিভাগত যেটো আমাৰ এতিয়া কয় আগতে আছিল সৰ্বশিক্ষা এতিয়া হল সমগ্ৰ শিক্ষা গতিকে তাত আমাৰ যিখিনি স্পেশাল চিলড্ৰেন আছে সেইখিনিও সমানে ফেসিলিটি পাব লাগে যেনেকৈ স্পেশাল এডুকেটৰ আছে এটা স্কুল বিলাকত ৰেম্প আছে আমি সবেই জানো গভৰ্ণমেন্ট স্কুল বিলাকতো ৰেম্প আছে আৰু ৰেম্পটো কম্পালসৰি বাথৰুম যিবিলাক টয়লেট আছে তাত যিটো স্পেশাল চিলড্ৰেনৰ কাৰণে ৰেলিং থকা হ'ব লাগে এইবিলাক আছে systems are existing the system is there but sometimes the systems are not followed so it is our responsibility it is not only the responsibility of one NGO or two NGOs it is the responsibility of all it is the responsibility of the teachers it is the responsibility of school management committee it is the responsibility of the public representative যিখিনি DCDC representative আছে যোন আছে সকলো পঞ্চায়ত so it is a responsibility of all that the facilities existing facilities of the government should be there in the school special educator আছে কিন্তু আমি জানো যে special educator নাযায় হয়তো যিখিনি আৰু আইডিয়া হল আমাৰ ইনক্লুসিভ এডুকেশন আমাৰ আজিকালি এটো নহয় যে মানে কোনোবা যদি ভিজুৱেলি ইম্পেয়াৰ্ড হয় ব্লাইন্ড হয় তেতিয়া তাৰ ব্লাইন্ড স্কুলতে যাব লাগিব ইনক্লুসিভ এডুকেশন এতিয়া মই আমাৰ আছে এনেকুৱা আমাৰ এনজিও আছে নিজৰো এটা এনজিও আছে য'ত আমি দেখিছো এজনী ছোৱালী ভিজুৱেলি ইম্পেয়াৰ্ড but we sent her to a school to visually impaired but we found that she was not familiar I mean she did not like the school so now she has been sent to the school to general school as a task initially কিন্তু কথা বুজা নাছিলে initially হতে মানে কথা বলা সৰি টিচাৰে মানে লব বুজা নাছিলে যে আমি ব্লাইন্ড ছোৱালী কেনেকে লম then we insisted yes you have to we means the NGO insisted that you have to take this girl she has to be admitted and she has to be given proper education like other children so now she is getting education so it is the responsibility of all because the system is there government has provided all the facilities but it is we people basically as a teacher or bazunchu all the stakeholders they don't perform their responsibilities Thank you. Next question. Madam, I just want to add, since I speak in a Boro, I think maybe somewhere you haven't understood what I must say. What I say and requested to education department that there are training institutions, right? So we doesn't train our teachers about disability. So where I think that is lacking. So if there is a child with blind or deaf and mute, we don't have specialists here to teach them. That is one of the problems. Where we have to send them somewhere in the deaf and mute school or in a blind school. So I really like to request our education department so that we come and take the initiatives. Yes, there are SSA and then RMSA where they have select few teachers and they send foundation course. But those teachers, since I was in the teacher challenge, the teacher is from our area. They are like they're just next year and retired.
they won't be able to teach. So I would request, please train some teachers who are young and can learn more about disabilities and different issues. I made a Salman akong kamay, nagatuhan. Sige guys, sige ko. Students na ako ay kamay. Imagine na, disabled children with disability, ako rights mo na. Sige kahit na, by dua, question raise kalaban. Ang sana tiyan ang kon, huyo ba, raise kalaban na ne. Albi, yung boy ko, देखो भी सुकोतरी का खराब बात हुई बात मारी बात तो वही में ड्यूटी देश पुलिस मतलब using a I'm along to reach down on the bar using it that's the back. Thank you. So thank you so much. Yes, please. I also want to very quickly respond to what Abo has said about two issues about the disparity in English medium schools and government schools that we see today. This disparity is one that has affected the education system throughout India. And I do not know about much about the other parts. And the national education policy is something that actually mentions about reducing the disparities between private schools and government schools. Now, the important thing that is that we need to understand here is that today our honorable chief made a remark in one of the panels that by the time the policy is formulated and completed in Delhi, we are only thinking about it here. So it doesn't translate into actual action on the ground. And in the context of our Bodoland territorial region, our education department is nowhere in the picture compared to other districts. Out of 104 districts in Northeast India, the BTR districts, 4 BTR districts, Baksa, Udalguri, Chirang, and Kokrajhar. Tamalpur was not a district yet at that time. Our districts ranked the lowest in terms of human development indicators as per the UNDP report. And yet again, the results that we see today in our higher secondary final examination, the metric examinations, जोंनि फरायसालिफ्रालाय बहा मोनसेबो बाक्साया मोनसे मोजां रिजाल्ट खालामदों देग्लाय बाट बेनि अनगायै there has never been a very good or positive result in terms of performance, and not only in scholastic performance, not only in academic performance, but in other indicators as well in terms of inclusion. We are nowhere in the picture. So somewhere something has to be started, and that is where I really like when again I'm quoting our Miguel sir and also our Manata Nakama, that something has to be started somewhere. And in this context, the government of BTR, as envisaged by again Honorable Chief, has initiated this school adoption program in also discussion with the UNICEF. The idea that is already there in our system, but it has not been implemented well, executed well. So, can civil society leaders, organizations, business houses adopt the schools? Like Ma'am was also saying that it is the responsibility of everybody to remove this disparity that exists and own up the task of improving our schools. So, having said this, I will end here. Thank you.
working. So I see the next session speakers and also presenter here. If there is no question, then we'll have to end the session. So before we end, let me just quickly summarize by saying that each woman and each child is matter. See, policy we can make, today, tomorrow, and day after, but the timing will never return. So we have to think how best we need to accommodate the need of each children in our existing policy, existing provision, and also, in our own work as Madam again and Chairperson again and again reflect. We need to understand roles and responsibilities. I'm happy to inform that in PTR, under the leadership of CM, the First Autonomous Council, they have introduced a concept called child-friendly PTR. And the vision is next 7 years, by 2030, in the next 7 years. Also, they have come out with a vision document for PTR, which is child-centric vision document. And in the next 7 years, we invite all stakeholders to come forward and support the BPC administration in realizing that vision document and to make PTR safe, smart, green, and child-friendly, so that we achieve all the sustainable development goals, particularly goal 5, goal 8, goal 16, 17, and also aspirational district goal. Udalguri comes under aspirational district. And also now Government of India side, Honorable Prime Minister said that Amrit Kal, so next couple of years, the next up to 2047. So this is, we are passing through this Amrit Kal, and then more allocation, resource allocation is coming from Government of India side. How do we leverage it? How do we, make best use of the policy provisions? There comes the role of all institutions, all stakeholders present here. With this, I would like to conclude this session, and once again thank each of the panelists for your deliberation, for your thought, and also rich experience that you have shared. And I'm sure the documentation team working hard. So I request all of you to put all the comments, all the observations together and share it with the organizing committee so that it gets recorded. So with this, I place that let us think about a small slogan which I have just drafted, that Surakshit Saisab Samruddh Pitya, and to make it realize we need participation of all stakeholders. So thank you once again for your patience and listening to this deliberation for 3 hours. Thank you. Last minute summary, highlight करना होता है. Last minute summary. Sir London by two like. हाँ? ये itu punya logo. Rajeshwar no. Itu na camera department. University So na much to Rajeshwar. know, to learn and to discuss. Yet we are always defeated by time. Vote Michinango, Rainango, Domo, to some Dimakawas and numbers are here. We would now, as a token of thanks, give our esteemed guests a certificate of appreciation from Bodoland International Knowledge Festival 2023. For this, I request the coordinator of the theme, Child Rights and Protection, Dr. Mukunda Deori, head of the Department of Mathematical Sciences, to come onto the stage. I now request Dr. Mukunda Deori to present the certificate of appreciation to Dr. Sunita Sankagoti, Chairperson, Assam State Commission for Protection of Child Rights. I request the audience to thank ma'am with a round of applause. I again request Dr. Mukunda Deori to present the certificate of appreciation to Ms. Mana Tanaka, Chairperson, Munakata Foundation, Japan. We would now like to present the certificate of appreciation to Professor Ursula Fasset, Professor of Social and Administrative Law, European Law, Human Rights, Frankfurt University of Applied Sciences, Germany. I request Dr. Mukunda Deori to present the certificate of appreciation to Mr. Miguel Das Kuya, Director, UTSA, Assam.
I again request Dr. Mukunda Deori to present the certificate of appreciation to Ms. Bhautina Musahari, Managing Trustee, Action for Inclusion and Empowerment Trust, AIET. I thank all the guests for sharing their immense knowledge with us. I now request my colleague, Dr. Anjalu Ransiari, Department of Physics, Bodoland University, to offer the vote of thanks. Thank you, ma'am. Good evening to one and all present here. At the very outset, I would like to thank the organizers for giving me the opportunity to present a vote of thanks in front of you. At first, I would like to thank Dr. Sunita Sankakoti, Chairperson, Assam State Commission for Protection of Child Rights. Thank you, ma'am, for your very informative and interaction session on child rights and protection. Again, I would like to thank Ms. Mana Tanakata, ma'am, Chairperson, Munakata Foundation, Japan. Thank you, ma'am, for your beautiful talk on sexual orientation and gender identity. Again, I would like to thank Mr. Mikul Daskwe, Director, UTSAH Assam. Thank you, sir, for your excellent talk on children protection and POSCO Act. And I would like to thank Professor Ursula Fassel, ma'am, for your commitment and effort to come here all the way from Germany. Thank you, ma'am. Also, I would like to thank Mr. Victor Narjari, sir, for helping Professor Ursula, ma'am, and presenting her PPT. Again, I would like to thank Ms. Bhautina Musahari, Managing Trustee, AIET. Thank you, ma'am, for your inspiring talk on children in special needs and their challenges. I would like to thank Mr. Lakshminarayan Nanda, sir, for moderating the session and brilliantly managing the time of the session. Thank you, sir. And at last, but definitely not the least, I would like to thank the audience who have come from different regions of BTR. Thank you everyone for your patience and listening the session and making this session successful. Thank you all. I request the audience to please be seated as we are going to start our paper presentation after a short while. So please take your seats.